Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience और AWP Awami Workers Party, जिसमें एक ए आता है. देखें आप लोग ये जो टाइपोस करते रहते हैं ना, अवामी दो ए के साथ लिखते रहते हैं, ये बहुत गलत बात है. एक आता है उसके अंदर. अमार राशिद इज हियर विद अस. कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है दादा, आप सुनाएं. बिल्कुल ठीक. सॉरी सर, टाइपो हो गया था. ए मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया था अवामी में. That's okay, it happens. मेरे नाम के साथ भी होता है. By the way, अगर if you're doing corrections, it's Rashid. I know it's spelled ID, और ये पता नहीं क्यों अब मेरे वालिदैन ने ऐसी स्पेलिंग रख दी, लेकिन प्रोनाउंस इसको रशीद कहते हैं. But people have been making this mistake all my life, so it's okay. ये इधर आपकी गलती है, इधर आपने स्पेलिंग गलत रखी हुई थी. I've known you for मेरे years. वालिदैन की. I've been calling you the wrong name for years. I'm really sorry. That's okay. कुछ सालों की हमारी बात हो गई शुरू, तो यहीं से शुरू करते हैं. आपने तो लम्ज में इमरान खान की पेशन गोई कर दी थी, आपको याद है? किसकी? What are you referring to? आपने इमरान खान के आने की पेशन गोई की थी लम्ज में. आपने स्टेज पे जाके एक गाना गाया था, मेगलोमेनियक. मुझे लगा अच्छा, I was second, I thought you were referring to the lawyers movement. मैंने कहा उससे मैंने नहीं ऐसी नहीं बात नहीं की थी. नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है. Yes. मेगलोमेनियक का कवर किया था आपने, इफ यू रिमेम्बर. I remember, yes, I do. हाँ, I didn't know कि ऐसा कुछ होगा. And honestly, in many ways, I think हमें अंदाजा काफी हद तक हो गया था कि इमरान खान will eventually, I think, emerge. But I think lawyers movement, जिसके अंदर हम में से भी बहुत सारे लोग शामिल हुए थे सियासत में, that was really like, I think, before even the 2011 Jalsa of the PTI, it was really the lawyers movement that set the stage for that kind of politics, I think. For uski, I think हम अब flowering देख रहे हैं in many ways, both good and bad. So you see it as evolution, because मैं तो उसको काफी देखता हूँ as a schism. मैं उसको देखता हूँ काफी as a break, कि स्पेशली 2013 के इलेक्शन में जहाँ एक कॉन्फिडेंस था, एक था कि मैनिफेस्ट ऑलमोस्ट कर रहे हैं विक्ट्री, विल पावर से विक्ट्री कर लेंगे. यस, कॉम्प्रोमाइजेस तब तक भी हो चुके थे, बट स्टिल एक इथॉस बेहतर था. बट वो 2013 की जो हार है, उसके बाद आई थिंक खान साहब ने फैसला किया कि सारे प्रिंसिपल्स गए भाड़ में. प्रायोरिटी वन इज पावर पे आना है. You don't see that as a schism, or do you see that कि नहीं, वो शुरू से ही सिलसिला इसी तरफ ही जा रहा था जिस तरफ वो पहुंचा है? I think fundamentally the PTI is a product of its historical circumstances. और मुझे याद है उस जमाने में भी PTI एग्जिस्ट तो करती थी जब भी हम भी स्टूडेंट्स थे, और इतनी नुमाया नहीं थी, लेकिन बहरहाल जब आते थे, मैं रिमेंबर आरिफ अल्वी एक दफ़ा आए थे लम्स में बात करने की, और उस वक्त भी उनका मुझे याद है उन्होंने भी इस तरह की एक बात की थी कि हम जब बड़े हो रहे थे तो कभी लेफ्ट का और राइट का ज़माना होता था, और कुछ लोग लेफ्ट के राइट के, तो हमने सोचा इन लेबल्स को छोड़ो और बस एक नई चीज़ बनाते हैं जो ना लेफ्ट हो ना राइट हो, और बस वो बस लोगों के लिए हो, या कोई ऐसी उनकी बात थी. दिस आइडिया जो पोस्ट कोल्ड वॉर आइडियाज थे कि लेफ्ट और राइट का बैटल खत्म हो गया है, और अब जो है बस इसी तरह इसी लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हमने चलना है, तो उसके अंदर बस आप ट्वीक कर लें, करप्शन को खत्म कर दें, थोड़ी मोरालिटी बेहतर कर दें, हल्का सा इस्लाम का तड़का लगा लें, तो जनरली चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो आई थिंक वो उसी की प्रोडक्ट है. अब वही बात है कि जाहिर है कॉम्प्रोमाइज इज डेफिनेटली इंक्रीज्ड आफ्टर 2013, एंड द आइडियलिज्म डेफिनेटली केम डाउन आफ्टर दैट. एंड ऑब्वियसली यू कुड आर्ग्यू पीपल लाइक तबिंदा खान जो कि पार्टी में उस वक्त थे, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है किस तरह के जहांगीर तरीन जैसे लोग लाए गए, और फिर एक इलेक्टेबल्स की सियासत को फ़रोग दिया गया, जिसके नतीजे में फिर आखिरकार में 2018 वाली जो कोalition बनती है. तो वो तो जाहिर है हुआ, यकीनन 2013 के बाद ज़्यादा तेज़ी से हुआ. लेकिन आई थिंक बुनियादी तौर पे भी जो पीटीआई की जेनेसिस थी, वो रूटेड थी एक इस तरह की नॉन आइडियोलॉजिकल एंटी पॉलिटिक्स में, जो कि हमेशा ससेप्टेबल थी कि इस तरह की कोऑप्शन उसके साथ होगी, क्योंकि उसकी कोई बुनियादी नजरियाती साख नहीं थी कोई इतनी मजबूत, जिसके गिर्द जो बात करते हैं ना कि एक पीटीआई नजरियाती भी थी जो ओरिजिनल कोalition थी इमरान खान के गिर्द, जिसमें नईम उल हक जैसे लोग और आरिफ रबी जैसे लोग. तो चलिए ठीक है, किसी हद तक कह सकते हैं. आई मीन आई सपोज सम ऑफ दीस पीपल आर क्लीनर देन अ लॉट ऑफ द अदर्स दैट केम लेटर. कोई इनकी फाइनेंशियल करप्शन का इन पे इल्जाम नहीं है, लेकिन नजरियाती तौर पे तो आई डोंट थिंक आप कह सकते हैं कि उनकी कोई खसूसी तौर पे कोई फर्क नजरिया है. मतलब वो कोई अलग चीज़ों की कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन की कोई बड़े पैमाने पे तो नहीं बात कर रहे थे, या कोई फौज को बैरक्स में डालने की तो नहीं बात कर रहे थे, या एनीथिंग पर्टिकुलरली रेडिकल तो उनमें भी नहीं था. तो आई थिंक वो एक, आई थिंक पीटीआई इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम, and its time had to come. I think
it was inevitable कि इस तरह की political formation पाकिस्तान जैसे मुल्क में जन्म लेगी. I think what it represents in terms of a difference from past such sort of attempts, especially like past military regimes. Okay, अभी भी obviously एक military supported regime है, but obviously there is a democratic facade to it, there is a civilian facade to it, there is some sense of, okay, there is a populism, there is a popularity to this. And I think the key difference is, again, populism. And जो मैंने इस पे, I did my MA dissertation on the PTI. I think we've spoken about this before. And I looked at it as like a form of kind of populism that links these different kinds of different demands together, whether it's the demand for like very efficient military style governance, to like anti-corruption, to some kind of reimagination Pakistani nationhood की एक और सारा गिर्द जुड़ा हुआ Imran Khan के फर्क के गिर्द about how he symbolizes जो एक Pakistani nationalism को in many ways. So yeah, I think वो है, I think वो हम देख रहे हैं, and I think we have to see through this course. मुझे 2013 में मुझे याद है कि एक दोस्त ने पूछा था, हारून नाम है उसका, हारून खालिद ऑथर है, कि 2013 में कि किसको वोट देना चाहिए उस वक्त. तो मैंने कहा तो खैर ऑब्वियसली लोकेट योर कंस्टिट्यूएंसी. उस वक्त तो हमारे तो मुश्किल से तो कोई कैंडिडेट थे भी या नहीं, हो जाहिर है पिंडी इस्लामाबाद में तो हमारे कोई कैंडिडेट नहीं था. तो मैंने तो यही कहा कि ऑनेस्टली अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में कोई लेफ्ट ऑल्टरनेटिव देखना, तो अभी फिलहाल पीटीआई को वोट. एंड फॉर मी जो अंडरस्टैंडिंग वाज कि भाई माय सेंस वाज देन कि पीटीआई की जो एक रेवोल्यूशनरी सपोजली एक पोटेंशियल है, जो एक उसका एक चेंज का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, जो काफी लोगों को करता है मुतासिर, that has to see its course, like that has to run through its course before एक हकीकी मुतबादिल बाएं बाजू का एक रेडिकल ऑल्टरनेटिव निकल सके. क्योंकि अभी जो है, जो खासकर नौजवानों में, बहुत सारे ऐसे तबकात में, खासकर पंजाब और पख्तूनख्वा में, जो इस तरह की आइडिया, द इमेजिनेशन ऑफ चेंज, वो इसने कैप्चर की हुई है. एंड अनलेस दिस सीज इट्स वे थ्रू, तब तक ये लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कोई ज्यादा रेडिकल चीज का नहीं तसव्वुर करेंगे. तो in many ways now I see this history sort of going through its phases, and I think the fact that the PTI came into power, or the fact कि ये regime आई जिस तरीके से आई, I think that has a lot to do with कि अब पाकिस्तान में आपको कहीं ना कहीं बस एक you do see the emergence of a more radical बाएं बाजू की सियासत, even if it's in its nascent stages. लेकिन मैं तो ये 15 साल से देखता आ रहा हूँ, तो भाई पिछले 10 साल से तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल है लेफ्ट की. एंड आई थिंक हैज अ लॉट टू डू विद जो भी regime in power है, and the kind of contradictions जिसको इसने जन्म दिया. थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ व्हाइल. आप कह रहे हैं कि इमरान खान का एक जो पॉपुलस एलिमेंट है, उसको थोड़ा मैं अनपैक करना चाहूँगा कि वो वाकई पॉपुलस है या क्वाज़ाई पॉपुलस है. और ये हिस्ट्री पढ़ के ना, ये एक बीमारी हो जाती है कि कुछ भी हो रहा होता है, आप हिस्ट्री से कुछ चीज़ निकाल लेते हैं. यू फील लाइक कि फंडामेंटली हमारी जो पॉलिटिक्स है, it has never needed to appeal to the masses. Maybe Zulfikar Ali Bhutto would probably be the first one. Obviously हम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान की थोड़ी मास मूवमेंट थी वहाँ पर, या फातिमा जना की भी थी. बट इवन अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें, it wasn't really a mass movement. वो कैटलिस्ट बनकर eventually पाकिस्तान मूवमेंट बन गई. बट मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स या कायदे आजम की पॉलिटिक्स was also mainly relegated to the elite centers, was mainly relegated to negotiating. Quaid-e-Azam was not going to the people for votes. He was going to the British, he was going to the Congress and arguing for the case of Pakistan. So Imran Khan also similarly has never needed popular support. वो उनका जो ब्रांड है या उनकी जो हिस्ट्री है उसकी वजह से साथ आता है. बट अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द जलसास जिसमें वो मेगलोमेनिया ऑन डिस्प्ले था, he's never needed mass appeal as such. और वो मुझे लगता है comfortable भी नहीं है in actually going to the people and having that interaction. So ये जो populous है, इसको जरा unpack करते हैं कि is it actually populous या थोड़ी quasi populous है उनकी, and they've needed to negotiate power in the power corridors rather than having a mass movement. Right. I mean, I agree with you completely. In many ways, the comparison between, I think, Imran, Jinnah, and to some extent Bhutto makes a lot of sense in that they come from the same mold. I mean, I suppose Imran and Jinnah more than Bhutto a little,
of obviously these brown sahibs that come from these established elite backgrounds, English, Oxford, Cambridge, or foreign educated, and उनके mannerisms और मगरिब को affectations जो तो एक समझते हैं बेसिकली। बिल्कुल उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और उनके जाहिर है कोई immediately at least in the first many years of their lives उनकी सियासत भी बिल्कुल इसी तरह की थी, like upward looking, just like very much like establishment politics, nothing much to do with the masses and not much support for the masses either, other than जो इमरान खान को obviously as a cricketer जो adulation थी उनके लिए वो थी, लेकिन for the first many years of his political career कोई अवामी support उस तरह से नहीं थी। आई थिंक उसकी ज़ाहिर है एक तो आई एग्री कि पाकिस्तान स्पेसिफिक वजूहात हैं। द मुस्लिम लीग वाज आल्सो ऑब्वियसली एन एलीट प्रोजेक्ट, इट वाज नॉट लाइक अ mass project like the Congress in the sense कि उसने कोई mass mobilizations popular support की बुनियाद के ऊपर एक कोई mass movement lead की हो। It Maybe was ultimately a collective. Gandhi would be a better Yeah, parallel exactly. than Congress. Absolutely. जी। I mean वही Gandhi within the Congress, right? जी। And obviously people like Ambedkar and the Bengal के leaders. लेकिन I think eventually what ends up happening in Pakistan is कि obviously 60s में you do see a change. It's not like पाकिस्तान में populist politics नहीं रही। 60s में जो पूरा एक state managed compact था पाकिस्तान का historical block जिसको कहते हैं, civil military bureaucracy का, जागीरदारों का, और जो early industrial class बन रही थी उसको फिर थोड़ा हिलाया गया in the 60s by both the National Awami Party, the Awami League, and obviously to an extent the People's Party. और एक नई कोalition उसके अंदर आई, एक नई क्लास ऑफ इंटरमीडिएरीज, ऑफ फार्मर्स, ऑफ वर्कर्स, स्टूडेंट्स, जिन्होंने एक तरह से एक अवामी सियासत को किसी हद तक फरोग दिया और उसकी सीड्स बुनियाद रखी। और 70s तक तो ज़ाहिर है, इवन टू सम एक्सटेंट 80s तक वो काफ़ी मजबूत रही, उसका मज़ामती किरदार काफ़ी मजबूत रहा। ज़ाहिर है 70s में तो आप देख सकते हैं कि पूरा मुल्क में सेंट्रल लेफ्ट की हुकूमतें थी। एंड देन आई थिंक अगेन 80s के अंदर उन सारे इदारों को तोड़ा गया जिनके ज़रिए पॉपुलर सियासत और प्रो पीपल सियासत जो है जन्म लेती है। ट्रेड यूनियंस हो गए, स्टूडेंट यूनियंस हो गए, मुख्तलिफ सियासी जमातें ऑब्वियसली 80s में तो ज़्यादातर बैन थी, वो पूरी Sorry, मजलिस I'm शुरा cutting ये you, but पूरी। would you go as far as saying कि इसी वजह से तोड़ा गया, क्योंकि एब्सोल्युटली, वो मास या था, क्योंकि वो पॉपुलस या मूवमेंट थे, कि ये नहीं होने दे सकते हम पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट वाज द स्किज़म इन पाकिस्तानी हिस्ट्री जो 60s और 70s में आई, कि एक्चुअली मास पार्टिसिपेशन होना शुरू हो गई सियासत में, और उसकी उनकी लाइक पीपल्स views and their needs were started being reflected to some degree in policy, in how we were conducting statecraft. और फिर वो सारा रोल बैक किया गया 80s में, एंड अगेन फिर आपको उसी तरह की फिर एक सियासत, उसी तरह की मैनेजमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स नजर आना शुरू हो जाती है, विच सी statecraft as mostly like just आप रिसोर्सेज को और लोगों को मैनेज करना है। It has nothing to do with reflecting the popular will of the people, or it has nothing to do with involving the people in any meaningful way governance के अंदर। एंड आई थिंक इमरान खान एक तरह से उसी चीज़ की पैदावार हैं, और पीटीआई भी उस चीज़ की पैदावार हैं। ये उसी तरह की उस हिस्टोरिकल ब्लॉक को जो था जागीरदारों का, सरमायादारों का और फौज का, जो कि चलाता आ रहा था पहले से भी, फिर 80s में भी और उसके बाद अगेन 2000 में भी, उसकी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगेन आई डोंट थिंक वी कैन ऑल स्टिल डिनाई कि एक पॉपुलिस्ट और एक पॉपुलर फॉर्म एंगेजमेंट हुई है। एंड आई थिंक उसके लिए समझने की जरूरत भी है कि व्हेन व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से पॉपुलिस्ट, लाइक यू आस्क्ड मी एज वेल, ऑफ कोर्स, कि अनपैक करना है। तो मैंने तो खैर एक अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन ऑब्वियसली थियरीज है पॉपुलिज्म की। द वन आई जो मैं आइडेंटिफाई सबसे ज्यादा करता हूँ वो अर्नेस्टो लग्लाओ की थियरी है, एंड व्हिच बेसिकली इसी पॉपुलिज्म की एक इट्स लाइक एक तरह की पॉलिटिकल लॉजिक है जिसके अंदर व्हिच सीज बेसिकली ड्रॉज दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक एलीट और एक मास के दरमियान, द एंटी पीपल एलीट और एक अवाम, और वो उसके दरमियान एक कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, एंड वो इस्तेमाल करते हैं कुछ एम्प्टी सिग्निफायर्स, एनी काइंड ऑफ सिंबल्स जो कि स्टैंड इन कर सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मास, चाहे वो चेंज हो, चाहे वो इनकलाब हो, चाहे वो तब्दीली हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, इस तरह की कोई भी लेबल जो कि लोग उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सके कोई भी मीनिंग, और फिर उसको इस्तेमाल करे उस एलीट जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की है उस एलीट की। फॉर इमरान खान इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एक पॉलिटिकल क्लास
नून लीग और पीपल्स पार्टी की शक्ल में जिसने रूल किया है, उसकी एलीट की कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर एस्टैब्लिशमेंट का कोई ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी सिमिलर एलीट की कंस्ट्रक्शन है जो ज़िया ने भी की थी, जो अयूब ने भी की थी, व्हिच इज़ व्हाई देयर इज़ अ थ्योरेटिकल कंटिन्यूटी जो मुशर्रफ ने भी की थी। इसमें बस एक लॉजिक तो इंटरेस्टिंग उनके एंड है। एनेक्डोट मुझे लगता है कि जब जब इमरान खान कहते हैं कि पिछले 20 साल में, पिछले 30 साल में मुल्क इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, वो कहते हैं नवाज और जरदारी ने पिछले 20 साल 30 साल में बर्बाद कर दिया है। बंदा पूछे कि पिछले 20-30 साल तो वो थे भी नहीं। या वो हमेशा जनरली वो इवन जब 10-12 यूथ ये साल ट्विटर काट पे जाती है हिस्ट्री की। कहती है, आई एम जस्ट लाइक, नाम तो ले लो, कह तो दो या मुशर्रफ, कह तो दो जिया, कुछ तो कह दो, नाम तो ले लो। या अगर 20-30 साल वाली आर्ग्यूमेंट करनी है, एटलीस्ट हैव द करेज टू से परवेज मुशर्रफ। या नो आई मीन वही आई गेस बाइटिंग हैंड्स वाली रेफ्यूजी वाली बात हो जाएगी। उनकी आधी कैबिनेट वही है, वो क्यों कहेंगे हाउ वुड पीपल डिफरेंशिएट। तो वो तो उन्होंने खैर एक फैसला कर लिया, अब वो इसी सिमत में चलेंगे। लेकिन आई थिंक टू जस्ट फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग कि तो एक तो ये एलीट की कंस्ट्रक्शन होगी, ये यूज ऑफ एम्प्टी सिग्निफायर्स हो गए जो कि उन मुख्तलिफ जो कोएलिशन बनती है पॉपुलिज्म की, मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स की, उनकी डिमांड्स को उन सिग्निफायर्स के जरिए जोड़ा जाए। तो मतलब सारे पीटीआई के, चाहे वो ट्रेडर्स होंगे, चाहे वो कोई मजदूर हों, या चाहे वो कोई फ्यूडल्स हों, वो सारे एंटी करप्शन अपनी शनाख्त के गिर्द जोड़ेंगे क्योंकि वो एक एम्प्टी सिग्निफायर उनके लिए बन गए। लेकिन आई थिंक जो अहम चीज़ है कि ऑब्वियसली ये सारी बातें डिक्टेटर भी कर सकता है, और करते हैं, मुशर्रफ ने भी ऐसी बातें की थी। लेकिन एक होती है पॉपुलिज्म, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अफेक्ट और अफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, एंड विच इज एसेंशियली, इसका मतलब ये है कि एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल और एक सॉर्ट ऑफ mass based investment in the idea that populism represents, and that is reflected. You see this in mass gatherings, you see this in how they articulate themselves, you see this जो होती है hero worship for the populist leader, you know, कि एक बड़ा active belief। मुशर्रफ के लिए कोई उस तरह की कोई outpouring of support कभी नहीं, even though I think a lot of people did support him initially, लेकिन वो बड़ा एक sort of you know watered down support था, एक बड़ा हाँ चलो ठीक है, मतलब अच्छा है, कोई डंडा चाहिए इसको हमको, चलो कुछ कर, कोई तो कर रहा है, करप्ट लोग निकाल रहे हैं, इस तरह का था। इमरान खान की देयर इज लाइक दिस, yes, he was our savior, he's the messiah, he's going to save us all, and that's generally in populism ये होता है कि it's one guy, you know, whether it's a right wing populist or left wing populist, एक बंदा होता है जिसकी गिर्द वो सियासत रिवॉल्व करती है, जिसके बगैर वो पूरी जो चेन जो बनी होती है मूवमेंट की या उस सियासी जमात की, वो टूट जाएगी। That's and obviously and sometimes populists manage to transfer power in some way, नेचर भी बदल जाती है, लेकिन जनरली वो उसकी केस होती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ affective investment in the sense of a lot of emotional investment, a lot of like belief expressions of belief that create like this kind of unity of purpose, जो कि है। तो आई थिंक वो एक फर्क चीज़ है, आई थिंक उसे तस्लीम करने की जरूरत है। मैंने 2018 के इलेक्शन के बाद भी आई रिमेंबर, मैंने खुद भी क्योंकि लड़े थे, मैंने काफ़ी लंबी पोस्ट लिखी थी इस पे कि यकीनन इस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, and we need to really get over why must फौज को हर इलेक्शन में इस तरह से, we need to have put a stop to this because obviously लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के साथ आपको खेलना बंद करना चाहिए। this enough is enough, in 2018 हो चुके हैं 21वीं सदी में। at the same time there is genuine popular and really emotional support इस तरह की सियासत के लिए जो इमरान खान ने जनरेट की है over a long period of time, और obviously बड़ी कॉम्प्रोमाइज तरीके से भी जनरेट की है, made a lot of you know pacts of the devil along the way, वो तो तस्लीम करने वाली बात। लेकिन अलबत्ता उसके लिए एक बहुत एक फर्वर और उसकी एक बायन है from large swathes of the population, particularly in urban areas, पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में, और to some extent in urban सिंध, जो कि आई थिंक अब काफी कम हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल कुछ तो था। तो yeah, so I think that's what I think really distinguishes it from like just a regular military regime or past similar इसमें experiment. आपने की बात अर्बन एरियाज की है, एंड आई थिंक जब हम पॉपुलस या मास बातें भी कर रहे होते हैं, मे बी मास और पॉपुलस में भी हमें तफरीक करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नज़र आती है शायद वो ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही हो। अगर सोशल मीडिया पे बार बार इमरान खान ट्रेंड हो रहा है या हर टेलीविजन शो पे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है दैट्स एक्चुअली रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मासेस, या मासेस की क्या राय है। गेम ऑफ थ्रोन्स की बड़ी अच्छी लाइन है, पावर रिसाइड्स वेयर पीपल थिंक पावर रिसाइड्स। तो आपने मुशर्रफ की बात की, वो शुरू सालों में बहुत ब्रांडिंग थी, आखिर में जब वो ऑलमोस्ट लीम डक बन गए थे एंड पीपल रियलाइज कि ये
ही इज नॉट एज पावरफुल, बट शुरू में उनकी बहुत ब्रांडिंग थी कि क्या दलेर आदमी है, क्या एसएसजी कमांडर है, दैट ब्रांडिंग वाज वेरी कॉमन। बट आपने एक अच्छी चीज पॉइंट की कि शायद उनकी जो कैबिनेट थी, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनमें आपको हीरो वर्शिप इतनी ज्यादा नहीं नजर आती थी कि यहाँ पे इमरान इस्माइल हो या फैसल वाडवा हो या फवाद चौधरी हो, वो ट्वीट कर नहीं सकते इमरान खान की तारीफ करे बगैर। आधी ट्वीट हैज टू बी इमरान खान की तारीफ, कि इमरान खान का शुक्र है हमने कोरोना से काबू कर लिया, इमरान खान का शुक्र है हमने ये कर लिया। दैट एलिमेंट वाजंट देयर एटलीस्ट इन द मिनिस्टर्स दैट यू सी नाउ इन इमरान खान। वहां शायद पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है कि खान साहब को पसंद है पर्सनल तारीफ, एंड पीपल रियलाइज कि पर्सनल तारीफ इज द वे फॉरवर्ड। बट जो मुश्किल सवाल, क्योंकि आज आप मुश्किल बातें कह रहे हैं, सवाल भी सारे मुश्किल आएंगे, कि व्हेन वी टॉक अबाउट फौज, do you feel we make the mistake of often thinking of them as a monolith as well? जिस तरह मुशर्रफ की भी बात की, if anything मुशर्रफ के खिलाफ फौज में जो एंटी मुशर्रफ सेंटिमेंट था, that also contributed to his downfall. ज़ियाउल हक कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाते, बट किसी ना किसी को तो पता ही होगा। ये बेनजीर तो नहीं करवा सकती थी ना जो हुआ है। सो जो विद इन द एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तो हम ये डिस्कस खुल के कर सकते हैं ना, नवाज शहबाज ओपिनियन, नवाज की ख्याल है, शहबाज की ओपिनियन, बट फौज में भी जो इख्तिलाफ राय होता है एंड हाउ दैट प्लेज इनटू पॉलिटिक्स, कि जब मे बी शायद मेन स्ट्रीम फौज की सपोर्ट थी भी पीएमएल गवर्नमेंट को एटलीस्ट शुरू में, या एटलीस्ट दे डोंट वांट टू रॉक द एप्पल कार्ट। उस टाइम इमरान खान कह रहे थे कि नहीं मैं गिराऊंगा, एंड आई थिंक मुशाहिद हुसैन आल्सो वेंट ऑन द पार्लियामेंट फ्लोर एंड सेड कि जनरल पाशा नहीं आएगा, सुनामी गटर में जाएगा। सो जो फौज की अपनी इख्तिलाफ राय है, वो भी तो प्ले आउट हो रही होती है इन पॉलिटिक्स में, और हम अक्सर उसको फैक्टर इन नहीं करते, एंड वी थिंक ऑफ फौज एज दिस मोनोलिथ। Absolutely, I think मतलब इसमें obviously I cannot claim to be an expert on this. मुझे inner establishment की workings का कोई बहुत तफसील में अंदाजा नहीं, लेकिन I think it's pretty clear and पाकिस्तान की सियासत में बताती है कि there is definitely factionalism, और एक या दो नहीं, multiple factions exist करती हैं। और आई थिंक इट्स जस्ट द नेचर ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह का किरदार रहा है आर्मी का, क्योंकि एक डीपली पॉलिटिकल किरदार रहा है, एंड उसकी वजह से फॉर इंस्टेंस जाहिर है फिर सियासी जमातें और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ने भी फिर फौज के उस तरह अप्रोच किया है, लुकिंग एट इट एज लाइक ऑब्वियसली एज बोथ अ पेट्रन एंड आल्सो एज अ कंपेटिटर, जिसकी वजह से फॉर इंस्टेंस प्रमोशंस में सुपर सेशन बहुत ज़्यादा होती है, और अमूमन उसकी वजह से फिर टॉप ब्रास में रिजेंटमेंट्स क्रिएट होती हैं, which then look for other kinds of political allies जो कि उनको अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकें। ये तो बहुत सारा हुआ है, ऑब्वियसली आई थिंक करंट डिस्पेंसेशन में भी ऐसा हुआ है। जब से ये एक्सटेंशंस का रिवाज शुरू हुआ है तब तो ये और ज़्यादा शदीद बढ़ गया। तो आई थिंक ये तो यकीनन है, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एज अ कंट्री कि इतनी मतलब कि आपकी एसेंशियली फिर इसका यही मतलब है ना कि आपकी फोर्सेस प्रोफेशनल उस तरह से नहीं रही, and a lot of the decisions that they make are ultimately based around very narrow personal interests, and I think we saw that play out PDM के अंदर भी बहुत सारा, कि जिस हद तक I think concessions कुछ हलकों ने अब हासिल करनी थी अपने लिए from the existing regime, वो उन्होंने PDM के जरिए कुछ ना कुछ की, जब उनको ज़रूरत पूरी हो गई तो पीछे हट गए और फिर वापस अमन हो गया विदिन। तो आई थिंक वो, आई थिंक इट्स अ गुड रिमाइंडर कि really you cannot throw in your lot with that, or you cannot expect कि वो आपको किसी भी तरीके से किसी जमहूरी अमल के अंदर आपके किसी पायदार तौर पे काम आएंगे, और ये शॉर्टकट्स ढूंढना, एंड आई थिंक ये हमारी सियासी जमातों का बड़ा पुराना अलमिया है कि बस कल भी हमने बजट के बाद जो हसन इकबाल ने जो ट्वीट की, मैं like आई a वाज थिंकिंग reminder। ऑफ द सेम ट्वीट एग्जैक्ट, जब आप ये बातें कह रहे थे, जब पीडीएम भी बनी, मैंने कहा था कि ये शिकायत नहीं है कि ये सिलेक्टेड है, शिकायत ये है कि ये क्यों सिलेक्टेड है और हम नहीं है। और ऐसा बिल्कुल इकबाल यही, ने भी और फिर उनकी ये ट्वीट किया कि हमने तो डिफेंस बजट इतना ज्यादा दिया था, इन्होंने देखिए कितना कम दिया है। बिल्कुल इज लिटरली लाइक सर हमें भी तो जरा खिदमत का मौका नहीं है थोड़ा सा, हमें भी तो दिखाएं हम कितने वफादार हैं जरा, हमें भी। आई मीन इट्स रियली सैड, एंड आई थिंक इट्स रिमाइंडर कि भाई कुछ नहीं हो सकता जब तक आप ये जो ऑल्टरनेटिव कोई एक नजरिया है जो ये पूरी हकीकी तारीख लोगों को बयान करे, उसके गिर्द कोई मास से, सियासी कूद बने, तभी कोई बुनियादी तौर पर तब्दीली आएगी। हाँ अलबत्ता मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता, आई थिंक ये जो इस तरह की जमहूरी स्ट्रगल्स होती हैं पीडीएम जैसी, उससे आई डू थिंक कि उससे कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट होती है,
उससे कहीं ना कहीं आप जो है अपने लिए कुछ ढूंढ के, इफ यू एक्ट इन अप्रोप्रिएट वेज, अगर आप लेफ्ट की तरफ से सोच रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप जो है यू कैन पुश things to a situation कि अच्छा ये maybe you're not getting abducted as much and you're not getting sort of repressed as much। और अगर जैसे ही वो जब कमज़ोर होती हैं, अगर कोई भी कश्मकश, अगर ऑपोजिशन जब कोऑप्ट होती है, तो आप देखते हैं कि किस तरह इजाफा होता है उस जबर में और abductions में और लोगों के अटैक्स में और साइलेंसिंग में और फिर इस तरह के लॉज आने में। तो आई थिंक वो ज़रूरी भी है चीज़, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक यू कांट रियली प्लेस टू मच होप्स इन इट। एंड इट्स नॉट जस्ट कि जिस तरह कहा जाता है कि जी हमारी वकार और हमारे बारे में आपने बात कर दी तो सोल्जर का मोराल कम हो जाएगा। इमरान खान की जो क्लिप है बीच में, आप भी जब प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे, अगर किसी को ये बुरी लग रही है तो जो इमरान खान की क्लिप है उसमें वो जो प्रोफेशनलिज्म और आर्म फोर्सेस प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, नवाज शरीफ पीपीपी के कोई लीडर उस हद तक नहीं गए हैं। तो इमरान खान जिस हद तक जाकर बातें कर चुके हैं, फॉर हिम टू बी द पोस्टर बॉय, आई थिंक इट्स रियल पॉलिटिक मोर देन जब जो आपको सूट करे, whatever स्विस नाइफ में से आपको जिस वक्त जो चाहिए टू कीप पावर। इट्स नॉट रियली अबाउट, एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज ये एंटी आर्मी है ये प्रो आर्मी है। इट्स जस्ट वक्त वक्त की बात है। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ऑन द अदर साइड इट्स जस्ट लाइक अब एक रियलिटी हो गई है कि अब ये जो एक इंस्टीट्यूशन है, इसने एक बहुत सारा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, अदर काइंड ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेट कर लिया। अब और वही जब आप बात करते हैं फैक्शंस की, अब ये फैक्शंस हैं भी क्यों? इस मतलब क्या इतना फर्क पड़ता है कि आपको प्रमोशन मिलती है, उसको मिलती है, उसके पीछे पूरा मुल्क आपने क्यों हॉस्टेज रखा हुआ है? And it's just the simple reality is कि it's just a lot of resources. Okay, it is very simply just इतनी ज़्यादा दौलत है, इतना ज़्यादा पावर है कि उसको लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते इतने आराम से। और हमने ये बड़ा एक परवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है कि अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा एक कमर्शियल एक्टर बन चुकी है एक ये एस्टैब्लिशमेंट, कि अब उनको इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ कि अच्छा स्टेट क्राफ्ट कैसे होनी है, फैसला साजी कैसे होनी है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ओके, हु डू दीज ऑल दीज रिसोर्सेज गो टू? ये इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के फैसले कौन करेगा? ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के फैसले कौन करेगा? ये बैनुल अक़वामी जो आ रहे हैं एमएनसीज और उनके साथ डीलिंग कौन करेगा? चाइना के साथ कमीशंस और कटबैक्स कौन लेगा? दीज आर मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चंस एंड हम इनके बारे में बात ही नहीं कर सकते कि भाई ये एंड ऑल दिस फैक्शनलिज्म हो गई, एंटी डेमोक्रेटिक चीजें, हम उनकी शांति हद तक ही बात करते हैं कि अच्छा नहीं कि नहीं होना चाहिए किरदार आपके जमहूरियत के अंदर या उस चीज़ के अंदर, हर एक इदारे को अपने उसमें रहना चाहिए। लेकिन ये तो दीज आर जस्ट द सिम्टम्स ऑफ जो फाउंडेशन उसकी तो है, वो तो एक बड़ी बुनियादी तौर पे मटेरियल एक है जिसके ऊपर हम सच कोई ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते। इस चीज़ से हम कनेक्ट करके इट्स अ ग्रेट सेगवे टू कम टू द बजट, बट एक बस छोटी सी मैं बात करना चाहता हूँ उस बारे में। अभी मैं एक स्पेस में ही सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि खुर्रम हुसैन भी पिछले हफ्ते आए हुए थे, उन्होंने समझाया था कि बूम बस्ट साइकिल है हमारा, कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है। तो सवाल ये होता है इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ क्यों नहीं होती है? तो अगर आप कंपेयर करें बाकी मुल्कों में, इंडिया, बांग्लादेश, कंपेरेबल साउथ एशियन इकोनॉमी में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है। तो फिर सवाल ये आता है प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता? बेसिकली हमारा मसला ये कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट करता। वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट करता क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो फिर सवाल आता है किसकी पॉलिसीज की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, किसकी पॉलिसीज की वजह से टेररिज्म को फरोख्त मिलती है। तो वो जुड़े हुए हैं। इट्स अ वेरी इजी नैरेटिव टू से नवाज शरीफ जरदारी करोड़ों अयान अली के बैग में डालकर बाहर ले गए और मुल्क तबाह हो गया। नहीं, आप ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ कभी सस्टेनेबल रहेगी ही नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपको वापस आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा इस बूम बस्ट साइकिल की वजह से, जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना लाएं और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट ना करे इन द इकोनॉमी। Absolutely. Yeah, I agree. I think this is a key question when you're talking about sustainable growth और consumption led growth, जो कि हमारा बड़ा पुराना अलमिया है, ultimately comes down to I think वही कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे एक crisis of production है। That's my understanding of it कि पैदावार जो है हम बहुत सब ऑप्टिमल करते हैं, even when you compare to similarly placed countries, बांग्लादेश हो गई, obviously इंडिया similarly placed उसे कहना तो अजीब लगता है, लेकिन काफी हद तक फिर भी
एंड ऑब्वियसली अदर कंट्रीज, वियतनाम आज से 40 साल पहले पाकिस्तान से बहुत गरीब था, एंड अब उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज हमसे बहुत ज़्यादा है, एंड वही उससे फिर सारे आपका एक्सपोर्ट करंट अकाउंट बैलेंस भी लिंक होता है, आपकी डोमेस्टिक नीड्स भी उससे लिंक होती हैं. And I think, obviously, and what you've pointed out in terms of political instability is one of the main reasons. Continuity policy ना होना और बार-बार regime change आना, पिछली policies को completely overturn कर देना. मैंने इसके ऊपर मैंने आसिम ने, नौफल ने एक पेपर लिखा था इसके ऊपर 1.5 साल पहले on पाकिस्तानी को, जब हम IMF प्रोग्राम में जा रहे थे, तो हमने wrote a paper on called the economy of debt and alternatives to austerity and neoliberalism, looking at कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम बार बार IMF के पास, हमारा 13वां प्रोग्राम है पिछले कोई 25 सालों में. और जो बुनियादी चीज़ आई थिंक, और हम इसमें इकोनॉमिक सेशन में इसके बारे में बात नहीं करते इस मुल्क में क्योंकि वो अलाउड नहीं है सच, लेकिन आई थिंक बुनियादी तौर पे इट इज़ अबाउट कि हमारी रियासत का जो किरदार है वो क्या है, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट इट इज़, एंड बिकॉज दैट डिटरमाइंस अराउंड कि इकोनॉमी उसके गिर्द किस तरह की फिर बनती है. और एक जो हमने बात की थी वो इसके हमारे रेंटियर स्टेट मॉडल है, और अभी दीज अदर पीपल हैव टॉक्ड अबाउट, पहली दफा फॉर्मुलेशन तो नहीं है, लेकिन द रेंटियर स्टेट इज बेसिकली एक रियासत जो कि अपनी ज़्यादातर जो नेशनल रेवेन्यूज़ हैं वो अपनी किसी वसीले को, किसी रिसोर्स को या अपनी किसी और स्ट्रेटेजिक एसेट को रेंट आउट करके हासिल करती है. तो चाहे ये हों ऑयल रिच स्टेट्स जैसे हैं सऊदी अरब और ईरान जैसे, या ईरान लेस सो बट मोर सऊदी अरब इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मोस्ट ऑफ इट्स इकोनॉमी इज अराउंड दैट. अब रियलाइज भी करिए कि कितना उससे मसला होने से. और इवन अदर नॉन ऑयल स्टेट्स लाइक इजिप्ट, जो कि भी अपने पिछले आधी सेंचुरी से अपनी इसराइल के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है और मिडल ईस्ट के अंदर ज़ाहिर है उसकी जो एक पोजीशन है, उसकी बुनियाद पे अमेरिका से और साम्राज्यी ताकतों से रेंट्स वसूल करती आ रही है. और वो भी हमारी तरह उसी तरह ही कोई 10 IMF प्रोग्राम से गुजर चुके हैं, अभी अभी 2 साल पहले से निकले हैं, और उसी तरह आमरीत ने भी वहाँ पे हमसे भी ज़्यादा गिनौनी किस्म की फौजी डिक्टेटरशिप्स रही हैं. तो ये एक स्ट्रक्चरल मसला है. पाकिस्तान पिछले 70 साल से यही करता आ रहा है कि हम अपने इंपीरियल पावर्स को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है रेंट आउट करते रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे हमें बहुत पैसा मिलता रहा है. रियासत को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी फ़ौज चलाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपनी टॉप ब्रास के लिए, सियासी और जो एलीट्स हैं उनके लिए उनकी ज़रूरियात पूरी होती रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कभी एक डोमेस्टिक प्रोडक्टिव बेस को बनाने में कोई एनर्जी या कोई वक्त या कोई रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं किए, और जिसकी वजह से हमारी वो नहीं बन सकी उस तरह की बेस. और दूसरा जो एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक ज़ाहिर लोकेशन है, जो ये ज़ाहिर है हम एक गेटवे रीजन हमेशा से रहे हैं इंपीरियल पावर्स के लिए, पहले अमेरिका और सऊदी अरेबिया, अब चीन के लिए. और दूसरी हमारे जो मैन पावर है, बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज लिटरली पीपल, लाइक लो स्किल लेबर, जो कि सरप्लस लेबर जो हम बेचते रहे हैं सारी दुनिया में, गल्फ में, इंग्लैंड में, और जगहों पे भेज रहे हैं, ईस्ट एशिया में भी, और उनसे जो रेमिटेंसेस आती हैं वो दैट्स लिटरली लाइक हाफ ऑफ योर एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट. तो ये जो दो चीज़ें हैं इनकी बुनियाद पे मुल्क चल रहे हैं. हर हुकूमत इन्हीं के ऊपर रिलाई करती है, नया IMF प्रोग्राम लाती है और रेमिटेंसेस को किसी तरह बढ़ाने की कोशिश करती है और लोगों को बाहर भेजने की कोशिश करती है. तो आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग को जो इंडस्ट्री है विच इज़ रियली, आई मीन अनलेस यूर अ स्मॉल सिटी स्टेट, ये माय फर्म बिलीव के या तो आप सिंगापुर या हांगकांग टाइप के मुल्क हैं, जो कि हम नहीं हैं. देर एक ही तरीका है जो दुनिया भर में अपनाया गया है लोअर डेवलप स्टेटस से मिडिल इनकम या हायर इनकम तक पहुंचने के लिए, वो है इंडस्ट्रियल कैपिटल, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है क्या? एंड मोस्टली स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, practically only state-led industrialization. Yeah, this is true for Western Europe and North America. This is also true for East Asia and to some extent South America. कि state-led industrialization हुई, often following large periods of land reform, और जिसके ज़रिए agricultural surpluses को route किया गया मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, जिस ज़रिए एक जो है और very very state-led, very regulated process, और वो हमने कभी नहीं किया. और हम उसी IMF के न्यू लिबरल मैंट्रास को बार बार 80s के बाद से अप्लाई करते आ रहे हैं, लिबरलाइजेशन के, जो है प्राइवेटाइजेशन के, डीरेगुलेशन के, जिनके वजह से वही बार बार स्ट्रक्चरल इश्यूज रिपीट करते आ रहे हैं.
और हमारी जो आई थिंक जो मेन चीज इसने किया है कि एक तो पहले से ही रेंटियर स्टेट थे हम, कि प्रोडक्टिवली तो कोई हमारा नहीं था, इतनी सलाहियत हम बना नहीं सके इकोनॉमी की। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक 80s ऑनवर्ड्स जो हमने जो एक रेगुलेटरी कैपेसिटी होती है, चलें आप ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर ही करे इन्वेस्टमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, फाइन, बट द स्टेट नीड्स टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी रोल टू इंश्योर कि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिव एरियाज में इन्वेस्ट करे, सारे प्लॉटों में नहीं पैसे जा रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें कि बैंक्स जो हैं वो किस तरह लैंड कर रहे हैं, क्या एक्चुअली बैंक्स प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लैंड कर रहे हैं, या इज इट जस्ट लाइक कंजम्पशन लोन्स, या इज इट जस्ट मोस्टली लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, जो कि पाकिस्तान में यही होता आ रहा है, सीधे कंजम्पशन बेस्ड लैंडिंग और हुकूमत को पैसे देना अपने खसारा पूरे करने के लिए। और तो जो रियासत है उसको जो ये मार्केट को, बैंक्स को और सेक्टर्स को रेगुलेट करने की जो सलाहियत होती है, विच इज़ लाइक कैपेसिटी दैट्स बिल्ड ओवर टाइम, तो वो हमारी खत्म हुई हुई है पिछले 20-30 सालों में, वो हॉलो आउट हो गई है। जो हम बार बार बात करते हैं, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता, हाउसिंग भी नहीं कर सकता पब्लिक सेक्टर, पावर में भी नहीं कुछ कर सकता पब्लिक सेक्टर, रेलवेज में भी नहीं कुछ कर सकता, नहीं कर सकता, ट्रेनें तो प्राइवेट सेक्टर ही चलाएगा। वो कोई हादसाती तौर पे नहीं है कि नहीं कर सकता, आपने पिछले 30-40 सालों से खुद बड़े प्लान तरीके से उसको हॉलो आउट किया। यू हैव रिमूव द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू रेगुलेट द मार्केट, और आप कहते थे स्टेट तो कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो एक मजाक है हमारे साथ आई थिंक। और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने बस एक प्योरली प्राइवेट सेक्टर लेड फ्री मार्केट डेवलपमेंट की हो और स्टेट जस्ट सैट बैक एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट्स मैजिक। दैट इज अ फिक्शन, दैट इज नेवर हैपेंड। ये हमें झूठ एक पढ़ाया जाता है। और कोई भी आप एग्जांपल देखें, एंड ऑफ कोर्स एनी ट्रेड इज इम्पोर्टेंट, मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट, ये कोई नहीं डिनाई करता। आई थिंक बहुत अहम, आई थिंक फॉर इंस्टेंस हैविंग मार्केट्स फॉर थिंग्स लाइक इंटरनेट, like digital services is good. I think उससे competition किसी हद तक prices को reduce करता है. But the state has a very very strong role to play even in the establishment of markets. और पाकिस्तानी रियासत इतनी खोखली हो चुकी है कि वो अब वो मार्केट्स बनाने की भी काबिल एक तरह से नहीं रही, रेगुलेट करना तो अलग अलग बात। और कुछ सेक्टर्स में, एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बुनियादी सेक्टर्स में रियासत का प्रोडक्टिव किरदार होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेक्टर्स में नहीं आप कंपटीशन पे छोड़ सकते। वाटर प्रोविजन शुड नॉट बी लेफ्ट अप टू कंपटीशन, इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट जस्ट बी लेफ्ट एज पावर जनरेशन। यहाँ ट्रांसमिशन लाइंस बस देख लें, कोई कंपनियां बिड कर लेंगे, कौन लगाएगा हाईएस्ट बिड पे। इट शुडंट वर्क लाइक दैट फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। एजुकेशन सिमिलरली, हम बहुत अरसे से द स्टेट एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, आप ज़ियाउल्लाह की 1980s की एजुकेशन पॉलिसी पढ़ें, उसमें लिटरली लिखा हुआ है द स्टेट कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द मासेस एंड द प्राइवेट सेक्टर मस्ट स्टेप इनटू फिल दिस रोल। दिस वाज पॉलिसी। 2010 में पाकिस्तानी रियासत ने पहली दफा तस्लीम किया कि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम। ठीक है, तो आप अभी हम बात करते हैं, देखें जी एजुकेशन पे जो हम बड़ा खर्च कर रहे हैं ये वो, आप पिछले आपने 60 साल किया क्या है? Literally the state abandoned its responsibility with a brief interlude जब भुट्टो ने स्कूलों को नेशनलाइज किया था और किसी हद तक मैथ्स लिटरेसी की बात कभी हुई थी, लेकिन ज़िया ने उस चीज़ को सारा खत्म कर दिया एंड फ्यूचर गवर्नमेंट्स नेवर रियली टुक इट अप विद एनी कंसिडरेबल सीरियसनेस। तो these are like legacies of long term, decades long legacies, neoliberalism की, स्टेट की hollowing out की, स्टेट की रेगुलेटरी कैपेसिटी की तबाही की, जिसको हम भुगत रहे हैं, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं आज। गॉड नोज ये कब अंडू होगा। बट डिक्टेटर फिल्म में साशा बैरन कोहन जब ओलंपिक्स में भाग रहे होते हैं, तो जो उनसे तेज भाग रहा होता है उनके पैरों पे गोली मार देते हैं, फिर इवेंचुअली जीत जाते हैं, जिस तरह वो सबसे अच्छे रनर हो। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी हर इदारे को गोली मारकर व्हीलचेयर पे बिठाकर हम कहते हैं देखें जी कोई इदारा नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है मार्केट रेगुलेट करने की। मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ये बजट आने से पहले किस किस की मुलाकात किससे हुई जिस वजह से ये हो? द मार्केट एंड नॉट इवन द मार्केट, द पीपल हु कंट्रोल रेगुलेट द स्टेट। यहाँ उल्टा हिसाब चल रहा है। बट वो जो लोग शायद पिछली चीज नहीं समझे थे, क्रिकेट एनालॉजी समझते हैं सर हमारी कॉम। क्रिकेट एनालॉजीज हमारी पॉलिसी ये है कि 40 ओवर आप टुक टुक करें, एंड में आफरीदी रजाक आके कुछ कर लेंगे। तो हम सिंगल डबल की इनिंग्स नहीं बनाते, हम छक्कों का इंतजार करते हैं कि ठीक है, मतलब जिस दिन अफगान सोवियत वॉर छिड़ी थी, यहाँ पे तो इन लोगों ने जश्न मनाए होंगे कि यस फाइनली हमारा चांस आ गया। सो वी डोंट एक्चुअली इन्वेस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू, वी आर जस्ट वेटिंग कि यार कहीं वॉर हो जाए, वहां से पैसे आ जाएं। अभी जब अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहे हैं, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई, वहां से पैसे आ जाएंगे। तो वो एक
इंटेंशन भी नहीं है। सो ये तो There is a फैक्ट है। source of easy money through that. No, आपको बस पता है, आपको मिल जाएंगे, आप कहेंगे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, आप हमें दें। हम चाइना के लिए भी अब यही कह रहे हैं, एसेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइडर रियासत। आप चाइनीज कंपनीज आएंगी, चाइनीज कंपनीज कुछ इन्वेस्ट करेंगी और वही अपने वर्कर्स को एम्प्लॉय करके कह देंगे स्टेट इज बेसिकली द सिक्योरिटी प्रोवाइडर। उसके लिए उसको कुछ रेंट्स मिल जाएंगे चाइना से, आपको पोर्ट्स लीज आउट करने की और करने के। इट्स दिस कांस्टेंट। एंड एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर सकती है। आई मीन आई रियली डाउट इट अनलेस वो आप उस स्टेट का कैरेक्टर को इवॉल्व करेंगे, उसके बारे में पॉपुलर रियलाइजेशन होगी, तो तब तक नहीं हो सकता। तो यहाँ मेरा हाइपोथेटिकल सवाल आता है, वुड यू बी लाइक के बस साम्राज्य गया भाड़ में, हमने अब साम्राज्य की गुलामी नहीं करनी। एंड आई नो थोड़ा पॉलिटिकल बयान है कि हम पत्थर बांध लेंगे, घास खा लेंगे, पर एटम बम बनाएंगे, एटम बम की बात नहीं कर रहे। वुड यू से कि बस हमने रेंटियर नहीं बनना, हमारी इकोनॉमी में शायद कम पैसे हैं, बट वी हैव टू जस्ट क्लोज इट ऑफ, नॉट कंटिन्यू बीइंग अ स्लेव टू द एम्पायर। साम्राज्य जो कहे वो गुलामी हमने नहीं करनी। मे बी जो हमारा बजट है वो एब्सोल्यूट टर्म में कम हो जाएगा, बट वी नीड टू डू दैट, स्पेंड लोकली, मैन्युफैक्चर लोकली, ताकि वो ऑप्शन, वो जो छक्के का ऑप्शन है कि कोई बस हमें जियो स्ट्रेटेजिक वजह से पैसे दे दे, एंड अगेन वो फ्री लंचेस नहीं होते, उसकी हमें प्राइस मासेस को देनी पड़ती है, इवन अगर कुछ लोग उससे पैसे कमाएं। वुड यू से दैट्स द वे कि जस्ट टेल द एम्पायर टू एफ ऑफ, क्लोज योरसेल्फ, इवन अगर हमारे एब्सोल्यूट बजट कम हो जाए? I have never been of the opinion that there are any easy fixes to this. And इसलिए मैंने कोई जब IMF का प्रोग्राम भी जब साइन ऑन किया था हुकूमत ने, तो मैं कोई हम तो हमारी पार्टी भी हम ये नहीं कह रहे थे कि भाई नहीं जस्ट टेयर अप द प्रोग्राम, बस खत्म करो और हमें नहीं चाहिए। Obviously these things are not going to be solved overnight, and they will require like building, for instance, policy sovereignty, state sovereignty over your own policies essentially, which is जो imperialism जिसको undermine करती है। That takes time and it requires a certain kind of policy direction. अब सवाल ये कि चलो आपने एंटर कर दिया प्रोग्राम, तो क्या आप उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो जिसके नतीजे में आप इवेंचुअली वो सॉवरेंटी एक्सरसाइज कर पाएंगे? एंड फॉर द फर्स्ट 2 years आई थिंक द आंसर इज completely absolutely no, and that's why we were talking about this, कि you're literally just repeating the same mistakes to an extent even now. I don't think something has changed, but I will talk about what I think किसी हद तक कुछ जो तब्दीलियां मुझे जो लग रहा है कि कुछ आ रही हैं सोचने में। लेकिन वही सवाल है कि आप साम्राज्य को, इन साम्राज्य इदारों को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ खास कह नहीं सकते जब तक आपने अपनी डोमेस्टिक जो अरेंजमेंट्स हैं और डोमेस्टिकली आपने वो उसके बरअक्स कोई एक बात की कोई आपने कोई सपोर्ट ना बनाई हो। एंड इवन अगर आपने बनाई हो तब भी मुश्किल है। इट्स नॉट इवन लाइक कि अगर आपने कर दिया हो, एक मास नैरेटिव बिल्ड कर दिया हो इंपीरियलिज्म के खिलाफ, तब भी कोई आसान है, लेकिन दैट डेफिनेटली gives you some space. Not ठीक है like ना? imperialist powers will sit there and be like, wow यार, good job. गुड जॉब, या ऑफ कोर्स यू नॉट सेइंग हम चले आपको आपके अब लोग छोड़ कह रहे देते हैं, हैं। अब आपके लोग कह रहे हैं फिर तो ठीक है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। एंड आई थिंक डेफिनेटली अर्लियर तो फॉर इंस्टेंस इन दी 90s फॉर इंस्टेंस देयर वाज इवन लेस। उस वक्त देखें एक, क्योंकि imperialism's power is not simply like some coercive power या simply financial power. I think obviously financial power कुछ है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग उन्होंने कर दी, अगर आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया, क्रेडिट रेटिंग्स हो गई, एक्सेस टू क्रेडिट लाइंस होगी, अगर आपने उन्हें कम कर दी तो अचानक स्टेट जो है को बड़े शदीद मसले पड़ सकते हैं, which you really don't have any quick ways around. बट एक और दूसरा पावर भी साम्राज्य का वो एक नजरियाती होता है, ठीक है ना? ये कहना है कि भाई हम जो आपको बता रहे हैं ना यही है, इसके अलावा कोई मुतबादिल नहीं है आपके पास, ये आपको करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन रेट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपको बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, आपको सोशल प्रोग्राम्स कम करने पड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी। आई मीन फॉर इंस्टेंस 90s में तो एक बहुत बड़ा मैंट्रा था वर्ल्ड बैंक का, ये जो आईपीपी जो सारी बनी भी कि भाई दिस इज द ओनली वे एंड पावर जनरेशन बस प्राइवेट उसमें ही होगी। बाद में फिर पता चला कि ओके एक्चुअली दिस इज गोना कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आप ये जो फिक्स कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने लिटरली हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाए रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी पावर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि 90s में दिस वाज जस्ट लाइक कैनन, दिस वाज जस्ट कि हाँ ये हकीकत है, आपने करना है, और कोई तरीके नहीं, हम भी यही कर रहे हैं। देखें, you know, you could just point to the US and say, look, we're deregulating everything, all our markets, so ये आपने भी ये करना है। Now the situation now has changed, I think obviously post 2007 generally,
एंड पोस्ट कोविड स्पेशली, कि वो जो IMF का और उसके जो ज़ाहिर इंपीरियलिस्ट बैकर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, वो उनकी अपनी सूरत हाल अब थोड़ी गंभीरता है, और उनको भी थोड़ी आई थिंक इस चीज़ की अब रियलाइजेशन डॉन करनी शुरू हो गई है कि ओके, द मैंट्रास दैट वी वर एक्चुअली प्रमोटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, और हम किसी हद तक अपने मुल्क में भी हम किसी हद तक कर रहे थे, ट्रम्प ने भी ऑब्वियसली आके जो टैक्स कट्स की और फिर से कुछ डीरेगुलेशन की कोशिश की, वो in this situation, okay, they're going to actually destroy us completely. And I think एक mass realization, yeah, we are suddenly now living in some kind of neo-Keynesian era all over again. अचानक जो हमें 20-30 साल से भाषण पढ़ाए जा रहे थे मार्केट्स के और लाइक डीरेगुलेशन के और लिबरलाइजेशन के, वो अब ट्रेड, दिस इज लाइक नाउ ट्रेड वॉर्स हो गई हैं, और डोमेस्टिक, और चाइना जो है वो वी नीड टू, अमेरिका, हिलरी क्लिंटन बैठ के बातें करी है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने की जरूरत है, और वी नीड टू हैव वर्क, यू नो, इंडस्ट्रीज फॉर अमेरिकन वर्कर्स, वी नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज, और वी नीड स्टेट सपोर्ट फॉर आवर इंडस्ट्रीज, और इस तरह की बातें कर रही हैं. एंड देन देयर इज मैसिव multi-trillion dollar injections into the economy, negative interest rates in the US, and like, you know, complete like state-led growth strategies. Biden is now trying to push for like this like largest sort of it's not the Green New Deal, but it's still like the largest infrastructure program in American history, and pretty much state-led. तो अब देखें वो पॉलिसी स्पेस जिसके अंदर आप नेगोशिएट करते थे IMF से, इंटरनेशनल पॉलिसी स्पेस, वो तो अब it's fundamentally changed. And I think you should, and I think the government is realizing this to some extent. शौकत तरीन की बातों से आपको कुछ ना कुछ लगता है कि वो भी कह रहे हैं कि जी हम तो करेंगे आपको रिस्पेक्ट, ठीक है, और अब हमने तो करना है, अब हम इस तरह से वो नहीं करेंगे बेल्ट टाइटनिंग. एंड आई थिंक that's a good sign. And I think हम बजट की तरफ अगर आए तो इस पे बात बट करेंगे, उसमें भी लेकिन अमार बिफोर डोंट यू दैट, जस्ट अच्छा सॉरी जस्ट टू, कंटिन्यू. हाँ हाँ, मैं बात ये कि आई थिंक वो पॉलिसी स्पेस बदली है, और आई थिंक वो चीज़ जो है दैट नीड्स टू नाउ फाइंड a kind of political expression, not just domestically, but internationally. And I think this should be done. अब increasingly, and मैं भी जहाँ बात करता हूँ तो मैं इसकी बात करता हूँ क्योंकि now these policy paradigms need to be openly questioned. And I think through institutions now, obviously UN के अंदर भी बातचीत की जा सकती है, through institutions like the Progressive International जो बन रहे हैं, जो कि इस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज कर रहे हैं, और जो कि इस पूरी और बात करें. आई थिंक इंक्रीजिंगली बात हो रही है कि अगर वेस्ट अब ये कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, बिकॉज़ यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव टू कीप योर इकोनॉमीज अफ्लोट, then why the hell are you imposing austerity and belt tightening on the developing world, which needs those that's spending much more than you? Okay, and it's really like it's just ideology now. अगर आप ये कर रहे हैं, ना तो तारीख में कभी किसी ने इस तरह करके तरक्की की है, ना इस तरह की क्राइसिस में, चाहे ग्रेट डिप्रेशन हो, चाहे 70s का डेट क्राइसिस हो, चाहे 97 का एशियन क्राइसिस हो, चाहे 2007 का क्राइसिस हो, किसी ने भी ऐसे क्राइसिस में कॉस्ट कटिंग से, सोशल स्पेंडिंग को कटा के, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के, मॉनेटरी कंट्रैक्शन करके, फिस्कल स्पेंडिंग कम करके ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं किए. तो व्हाई वुड दैट be the prescription now? And I think that needs to be pushed very strongly, more so I think than the government is doing right now. अभी पता चलेगा भी क्या ये आजकल negotiations चल रही हैं. Let's see what they, बजट को how जरा they अनपैक negotiate. करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो ये होपफुल स्पिन दे रहे हैं उस पर मेरा सवाल ये है, डू यू फील इट्स अ जेन्युइन पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट, या हमने पास में भी ये देखा है कि जब IMF के पास आप जाते हैं, शुरू में आप सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स करते हैं, देन यू रियलाइज कि जी 2 साल में इलेक्शन है, अगर डेवलपमेंट नहीं की तो वोट नहीं पड़ना. सो Yeah. नाउ दिस मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट, यू सी, डू यू फील लाइक ये पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए है, या डू यू जेन्युइनली फील लाइक नहीं ये पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट भी है इसमें? Yeah, I don't know if it's a paradigm shift. I don't know if that would be probably taking it a bit too far. What, okay, as far as the budget is concerned, and then जो भी economic सूरत हाल है उनकी, मेरे से, look, I there is like very little I can agree with this government on, and I fundamentally disagree with its legitimacy, or which I think उसकी आगे जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप उसी रेंटियर स्टेट को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसके साथ एक कोalition में पावर में आके, और उसकी इंस्टीट्यूशनल इम्प्रिंट को समाज के अंदर, रियासत के अंदर स्ट्रेंथन करके. तो एक बुनियादी तौर पे तो वो पाकिस्तान के हवाले से तो वो पैराडाइम वही है
एंड उस पैराडाइम को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ये छोटे मोटे टेक्निकल फिक्सेस हियर एंड देयर, इंजेक्शन ऑफ मनी एंड सम काइंड ऑफ स्टिमुलस हियर एंड देयर इज नॉट रियली गोइंग टू सॉल्व वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो वो बात तो एक तरफ कि उसका तो मुझे नहीं नजर आ रहा कुछ हो रहा है, बल्कि इट्स गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो मेरे नजदीक जो आई थिंक जो वेलकम बात किसी हद तक जिसको मैं कह सकता हूँ, जो आई थिंक लेफ्ट के लोगों में भी आई थिंक किसी हद तक तस्लीम करने की जरूरत है। Because I personally also think we need to get out of this whole thing of like rejecting the mainstream in every possible way, और हम तो बात ही नहीं करते। I think we need to change that approach. We need to engage with reality, index ourselves in the current reality as it exists, and figure out ways to move forward. तो उसके अंदर जो मेरे नजदीक जो किसी हद तक खुशाइन बात है कि आई फील लाइक दी ऑस्टेरिटी एक्सपेरिमेंट जो पिछले 2 साल से हमने लगाई हुई थी, वो किसी हद तक देव नाउ अबैंडनिंग दैट टू अ डिग्री। लाइक किसी हद तक वो अब वापस मुड़ रही है। लाइक वन ऑफ द मोर वेलकम यूज दैट दिस गवर्नमेंट हैज टेकन, क्योंकि वो मान रहा था कि यही जरूरत है, ये करेंगे, हम अखराजात कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखेंगे तभी तरक्की होगी। That was a bad idea, and I think किसी हद तक वो realization उसकी हुई है। And I think वो ये इसलिए नहीं हुई कि बड़े कोई जबरदस्त इकोनॉमिक थिंकर्स आ गए इस हुकूमत में जिन्होंने अचानक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया ऐसा कुछ। I think what happened was the pandemic essentially in many ways। जो अभी इकोनॉमिक रिकवरी जो आई थिंक किसी हद तक माइनर रिकवरी जो आई है, I put it down to जो the opportunities created by the pandemic, and obviously I don't mean to say that कि अच्छा in every crisis there is an opportunity whatever, but in many ways the pandemic ने allow किया कि जो ये आप ये जो जिन पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस के साथ आप चल रहे हैं और आपको लग रहा है इनसे आएगी तरक्की, उनको अबैंडन करने का एक मौका दिया, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दूसरे ममालिक में भी। थोड़ा अगर मैं इस एंड assertion पे पुश आप बैक कुछ कह कर रहे हो? सकूं, हाँ, द रीजन मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि पॉलिसी चेंज है कि अभी भी आपको गवर्नमेंट की एक फैसिनेशन नजर आ रही है बजट डेफिसिट के साथ कि जी डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ए जनरली yeah, व्हाट्स of योर course, which is आइडिया why it's not ऑन, amazing, yeah. व्हाट्स योर जनरल आइडिया कि अगेन गवर्नमेंट जो है वो आप और मैं नहीं है कि सैलरी 30,000 आ रही है तो 35,000 खर्च कर दिए तो 5,000 कहाँ से आएंगे। देयर इज अ गवर्नमेंट, दे कैन डू Right, दैट। डू यू फील लाइक right. ये वैलिड फैसिनेशन है डेफिसिट से या No, no, एक्चुअली गवर्नमेंट को absolutely जो not. कर No. जी गो No, फॉर मैं अभी तो देखें बजट पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं बजट पे तो नहीं आया। आई वॉज टॉकिंग मोर अबाउट अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी जो किसी जो अभी 4% ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं उसको, बिकॉज इफ यू एक्सेप्ट एंड आई लुक्ड एट द डेटा, किसी स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको पढ़े, आई डोंट थिंक दिस इज लाइंग अबाउट इट, आई डोंट थिंक ये कोई डेटा फज्ड है और एनीथिंग। एंड लोगों से भी आप बात करते हैं, देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक पिकअप, ठीक है ना, एक्टिविटी कंपेयर्ड स्पेशली कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसकी निशानदेही करना कि ये क्या हुआ है, ये कहाँ से हम 0% ग्रोथ से 4 पे अचानक चले गए हैं। आई थिंक उसकी निशानदेही करना बड़ा अहम है, रिगार्डलेस ऑफ कि हुकूमत ने क्या अच्छा किया है बुरा किया है, रिगार्डलेस ऑफ उनकी कोई पॉलिसी पैराडाइम को बहुत ज्यादा तब्दील हुआ है या उनकी कोई ऑब्सेशन विद डेफिसिट्स और बेल्ट टाइटनिंग खत्म हुई है नहीं, वो तो उस पर आएंगे। लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी आई कहाँ से, ये देखने की जरूरत है। क्या ये इसलिए आई है कि बस हमने खर्चा बड़ा कम कर दिया था हुकूमत ने, फिस्कल टाइटनिंग हुई थी बहुत ज्यादा, सोशल स्पेंडिंग काटी थी इसलिए आई है? क्या इसलिए आई है कि हम इंटरेस्ट रेट्स हमने बड़े अरसे 13% पे रखी तो फाइनली इकोनॉमी बढ़ना शुरू? ऑब्वियसली दैट डिडंट हैपन, राइट? व्हाट हैपेंड वाज कि आपने आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया एंड क्योंकि सारी इकोनॉमी बंद करनी पड़ी थी और ग्लोबल इकोनॉमी भी हॉल्ट आ गई थी, तो यू हैड टू इंजेक्ट अ लॉट ऑफ मनी थ्रू बोथ फिस्कल स्पेंडिंग, जो आपको एहसास, एंड फॉर व्हाटएवर आप the shortcomings with the government's policy response, currently we have the largest social protection response in the history of this country, ठीक है ना? तो आज से 2 साल पहले जो किया गया है एहसास प्रोग्राम के साथ, जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम स्पेशली जो था, दैट हैज नॉट बीन डन। एंड आई थिंक जहां तक मैं बात करता हूँ पैराडाइम शिफ्ट की, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 2 साल में आया है, दिस आई सी दिस एज 10-15 years in the making। I think the SARS के बारे में जो मेरे नजदीक तो I credit the government for this, is one of the few things I credit them on, and especially Dr. Sania Nisra, I think उनके बगैर ये नहीं कर पाते, and I see her and I think a lot of people have critiques on the left about this kind of model, and I agree this is not like a solution, okay? This is like a particular kind of fix that within a capitalist model जिसके जरिए आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां से हम आ रहे हैं, राइट, कि जिसको ये क्या आप लोगों को खैरात देते हैं, ये भिकारी बिस्प तो बना रहे हैं गालियां आप पड़ लोगों रही को, होती थी, बेस्ट को जो गालियां देते थे,
उससे अब एक सी शिफ्ट आ गई कि वही लोग जो गालियां देते थे, आप कह रहे हैं देखें दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। आई डोंट नो, आई सी दैट एज ओके, थैंक गॉड हम कम से कम इस सतह पर तो अब आ गए हैं कि वी डोंट थिंक दैट सपोर्टिंग people, the poorest of the economy, and giving them some bare minimum sort of consumption potential and boosting domestic demand through it is a terrible idea that turns people into beggars. That was a very stupid popular perception. I think but I think what is really disappointing about how PTI goes about Ehsaas is how they try to disconnect it and present it as something जो कि बिल्कुल ही अलग चीज है, ये तो बस हमने किया आके. No, it's a continuity, and I think all Pakistan's mainstream parties to some extent share credit for this. People's Party absolutely, I think वो पहले से इस मामले में थे, and obviously जो social economic registry answer जो बनी, जिसकी बुनियाद पे आपने अभी भी टारगेटिंग की है बिस्प के लोगों की, आप कर पाए इतनी जल्दी, इतने छोटे पैमाने में आप लोगों को दे पाए, अगर आपके पास आंसर ना होती तो आप ये नहीं कर पाते. आई थिंक इट्स वेरी डिसइनजेन्युअस. पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल अलग प्रोग्राम है, ये तो नया प्रोग्राम है, इसका तो ठीक है कंसोलिडेशन आपने कोई की है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की दौर की और नून लीग ने कंटिन्यू रखा और इन सम सेंस अब कंसोलिडेट हुआ है. तो आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट वी शुड सी एज welcome movement on some very basic ideas of public policy, and I think we should impress this upon both the government and the opposition. Okay, now let's agree on all this. This is something we have to build upon. This is not something आप बाद में आप abandon कर देंगे, नहीं ये क्या खिलाफ आप ले रहे हैं. And I think so इस तरह की चीजें जो हैं इनको अभी एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाद में अब आके बातें शुरू हो जाएं कि जी हमने किस तरह रिकवरी की. जी देखें, बस हमने मार्केट को इनकरेज किया और हमने ये किया और हमने कंसेशंस दी और एमनेस्टीज दी और तभी जाके सब कुछ हुआ. नहीं, आपने बुनियादी तौर पे डिमांड को भी जो बूस्ट जो मिली वो अगर ना मिलती तो बढ़िया आप जितनी मर्जी एमनेस्टीज देते थे, जितनी मर्जी आप इनको रीफाइनेंसिंग स्कीम्स करते थे स्टेट बैंक के जरिए, जितने मर्जी आप लोन्स राइट ऑफ करवा देते, लेकिन कोई खरीद ही नहीं सकता था. And this is a fundamental problem of the capitalist economy, which Marx talked about 150 years ago, the crisis of overproduction, जो कि बार बार सरमायादाराना निज़ाम में आता है कि वेजेस इतनी डिप्रेस हो जाती हैं, रियल वेजेस, कि वो खरीदने की सलाहियत ही नहीं रहती जो सरमायादार जो बना रहा होता है, जिसकी वजह से एक फिर बहरान पैदा होता है, जिसको फिर वो फाइनेंशियल मीन्स के जरिए, कलोनियलिज्म के जरिए, नई मार्केट्स ढूंढने के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से कैपिटलिज्म हल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई पायदार हल नहीं होता. अब तो ये खैर ये सारी चीजें आई थिंक बस इनको तस्लीम करने की जरूरत है कि ये इनसे फर्क पड़ा और ठीक ठाक फर्क पड़ा. और ऑब्वियसली and I think जो खुरम saying I saw your podcast with him. I think he made some really good points कि आई थिंक बुनियादी तौर पे तो मसला तो हल होता है, लेकिन इट स्टेज द सेम कि किसी हद तक जाहिर है आपने डिमांड को बोल्स्टर किया, लेकिन रियल वेजेस जो डिस्ट्रीब्यूशन जो उस ग्रोथ की जो हुई एंड जो एक्चुअली जो प्रोडक्शन के जो हुई और उस प्रोडक्शन की जो सरप्लस है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स, वो ऑब्वियसली इज एक्सट्रीमली लॉपसाइडेड. एंड इफ एनीथिंग इट्स इवन वर्स, एंड यू प्रॉब्ली सी कि इनइक्वालिटी में शायद इजाफा भी हुआ और आने वाले दिनों में होगा, और उसकी वजूहात के ऊपर भी बात करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आई रियली डोंट थिंक कि जो रिकवरी जो आई भी है उससे द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री को कोई सस्टेनेबल फायदा हुआ है. येस, पीपल हैव बीन एबल टू हैव इनफ टू मे बी बाय essential goods and services, most people, which is fine. This is better than them starving to death. जिसकी वजह से इकोनॉमी भी कुछ ना किसी हद तक फ्लोट रही है, और ग्रो करने की भी कुछ स्पेस मिली है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ हु इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस ग्रोथ, दिस एब्सोल्युटली इट इज स्टिल जो सरमाया है, जो सरमायादार है, जो बैंक्स हैं, record high profits banks के हो रहे हैं पाकिस्तान में. And then obviously what we need to I think really talk about is जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो एमनेस्टी आते हैं. which is like वेजेस की आपने बात की और खुर्रम हुसैन ने लास्ट वीक कहा था कि मिनिमम वेज देखेंगे, वो 20,000 कर दी है, ग्रेट थिंग. बिस्प की आपने जो बात की वो एक, but still like it's not a living wage by any means. it's something, कम से कम 30,000 होनी चाहिए. it's something altogether. Incremental reform, if not ideal, still needs to be appreciated because it's incremental. अगर हमारे PSDP बहुत बड़ा है, about 40% if I'm not mistaken, जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो इवन वो कल्चरल नैरेटिव्स को हमें लड़ने की जरूरत है कि बिस्प का जब भी जिक्र आता था एक आइडिया था ये तो वोट खरीद रहे हैं, ये तो करप्शन ही करप्शन है, अपने लोगों को इसे पैसे देते हैं.
एंड यूर एब्सोल्युटली राइट कि अभी इवन विद इन पीटीआई इमरान इस्माइल जब जाते हैं चेक देते हैं बोलते हैं देखिए हमने आपको दे दी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ खैरात. इट्स नॉट, इट इज योर इकोनॉमिक पॉलिसी. द वन यू रियलाइज कि यही चीज आपकी इकोनॉमी को फ्लोट रख रहा है, ये आप किसी को खैरात नहीं दे रहे, ये आप अपनी इकोनॉमी अपना मुल्क ही बचा रहे हैं. वंस वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीस थिंग्स लाइक दैट, वो जो एक नैरेटिव है कि जो गरीब जो है ये सब हैंडआउट्स ले रहे हैं आपसे, होपफुली वो नैरेटिव से एक ऑल्टरनेट मिलेगा हमें. बट इवन द गवर्नमेंट जो एहसास को जितना सेलिब्रेट करे, अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है उसको करते हैं, द इंक्रीज हैज बीन मिनिमल. एहसास शुड हैव बीन एटलीस्ट 1% ऑफ द बजट. आई थिंक वो 0.2% है, कुछ इस तरह से बहुत मिनिमल इंक्रीज आया है एहसास प्रोग्राम. Here's the thing, मैं जो एहसास की जो बात कर रहा था, again I was talking in context of the recovery. I'm not talking about the budget. I wasn't talking about the budget. I was particularly talking about the injection जो एहसास emergency cash के जरिए हुई और किसी हद तक जो बढ़ाया गया. And this was, I feel like this was a response to the really overwhelming public pressure at the time. जब pandemic आया था, obviously they took many weeks to find their feet on it. और हमने literally first day, this was like at the start of March, जब कोई बात भी नहीं कर रहा था, हमने बोला कि okay, you're going to, we put out a position paper on the pandemic as well. और हमने उस वक्त कहा कि आपको इतने बिलियन, 300 बिलियन का, आई थिंक 2 या 300 बिलियन का हमने फिगर दिया था, आपको इंजेक्शन करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स. और ये हमने, मैं तो लिटरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक जाके गया, उनको जाके मिलते ही, और एंड डॉक्टर सनी, मैं तो खैर उनके साथ, आई बीन वर्किंग विद हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने उनको ढेर सारी ये चीजें कहा कि प्लीज दिस इज समथिंग वी नीड टू डू. दिस वाज नॉट समथिंग हुकूमत ने इनिशियली खुद से ही सोच लिया. एंड ऑब्वियसली दिस इज, एंड उसके कैंपेन में, इफ यू रिमेंबर, कि बेसिक इनकम की गिर्द एक मैसिव कैंपेन चली थी कि वी नीड सम काइंड ऑफ अ बेसिक इनकम प्रोग्राम. दिस वाज अ ग्लोबली भी चल रही थी उसके बारे में. And I think it was successful, and I think they listened at that time. And I think वो pandemic के जो initial days थे, वो एक वक्त था कि we actually had a lot of really rich policy debate from the opposition, from the government, from civil society, from even the left. And I think a lot of those ideas did eventually go into practice. And I think we need to acknowledge this. खान साहब से वो चीज डिबेट करना मुश्किल था, अनफॉर्चुनेटली. खान साहब had reduced it to lockdown, गरीब मर जाए, नो लॉक. दैट वाज नेवर द ऑलवेज द जो लोग लॉकडाउन का आर्ग्यू कर रहे थे वो थे लॉकडाउन विथ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स एंड कैश इंजेक्शन फॉर पीपल हु नीडेड द मोस्ट. ये चीजें साथ साथ थी. तो वो जो एक महीना खान साहब ने वो डिले किया जस्ट बाय आर्ग्यूइंग कि एलीट तो चाहते गरीब मर जाएं, which was never what was being argued for. Yeah, absolutely. I think he was obviously more difficult to convince on many of these things, but nonetheless, I think what happened in March, April of 2020, I think set the course. I think everywhere. I think I do think the government deserves some credit. I think they did end up taking some important steps, and the opposition, I think, to its credit, did not really उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं प्ले किया. चाहते तो लॉकडाउन के ऊपर भी हुकूमत को जलील बहुत ज्यादा किया जा सकता था, या इस बेसिक इनकम या कैश ट्रांसफर्स पे भी, जिस तरह पीटीआई करती होती थी व्हेन इट वाज इन ऑपोजिशन, कि वो ये कैश ट्रांसफर्स क्या दे रहे हैं, मतलब यू नो बहुत सारी, जिस तरह बिस्प को किया गया. सो आई थिंक लोग कंफ्यूज हैं. बाय द वे, कंसेंसस अराउंड दिस थिंग. People, by the way, in case confused चल रहे हैं, BISP was Benazir Income Support Group program. Sorry. Yeah, of course. I think people generally are aware. वो इंडिया में भी काफी लोग सुनते हैं, so maybe they would be like कि क्या BISP करते जा रहे हैं. Yeah, I get what you mean. But I was just talking in terms of, I agree. इस साल तो उन्होंने कोई, I think it's not any massive. I think उन्होंने क्या 40 बिलियन शायद बढ़ाया, 200 से 240 या 250 इस तरह कुछ कर दिया. And I think that's a missed opportunity, and I hope this is reconsidered. But yeah, again, I think what, in terms of the budget, if I may ask one more question about this, कैपिटलिस्ट रिटॉर्ट इसका शायद ये आएगा कि इवन वेजेस की बात कर रहे थे, उस पे गवर्नमेंट वेजेस जो इंक्रीज गई हैं, फॉर्मसन सही कहते हैं कि वो कोई फायदा नहीं है. जब हर साल 10% इन्फ्लेशन हुई है, अब आप वेजेस 10% इंक्रीज करें जो आपने 1-2 साल नहीं की थी, तो इन रियल टर्म्स तो 20-30% पीछे होगा. बट जो एक कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट या कैपिटलिस्ट रिटॉर्ट आएगा कि अगर आप वेजेस इंक्रीज करते हैं तो पीपल विल रियलाइज परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो वो प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे. और मिनिमम वेज भी अगर इंक्रीज हुई है, ये एक रिपब्लिकन टॉकिंग पॉइंट है कि मिनिमम वेज आप इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा. अभी किसी ने बहुत अच्छा चिपोटले का किया था कि चिपोटले सेट के वी इंक्रीजिंग आवर प्राइसेस बिकॉज मिनिमम वेज बढ़ गई है. एंड पीपल वर लाइक 100 मिलियन स्पेंड किया आपने ताकि सीईओ जो दफ्तर है
वो अपने घर के करीब कर सके। 100 मिलियन उसमें लगे, आपने शेयर होल्डर्स को इतने मिलियंस दिए, बट न्यूज आप क्या दे रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ी क्योंकि मिनिमम वेज बढ़ी। सो व्हाट वुड यू राइट। रिस्पॉन्ड टू दिस आइडिया कि मिनिमम वेज विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और ये जो प्राइस वेज सर्ज है? Yeah, I think this is a problem कि एक बहुत एक जाहिर है, एक नियोलिबरल मैंट्रा तो ये हमेशा से रहता है। ये लेकिन मेरे नज़दीक एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये, द फैक्ट कि employers or whatever producers are able to pass off the increased cost of labor to consumers is, I see it as a regulatory problem. Okay, लेकिन अल्टीमेटली तो जो पैदावार है उसके दो हिस्से बुनियादी तौर पे होते हैं, वेजेस पे जाते हैं, ऑब्वियसली कुछ रेंट्स में ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट होती हैं, एंड प्रॉफिट्स। तो इट्स अल्टीमेटली इट्स अबाउट व्हाट शेयर ऑफ द प्रोडक्शन इज गोइंग टू हु। एंड पिछले तो हम 30 सालों से देख रहे हैं कि लेबर शेयर इन नेशनल इनकम हैज लिटरली, इट्स 70s में तक एक पीक में आया था ग्लोबली, और पिछले 30-40 सालों पे तो वो लिटरली इट्स अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, और इट्स एट द लोएस्ट लेवल इट्स एवर बीन इन मे बी द हिस्ट्री ऑफ सिंस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रियली स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। एंड आप ये बात कह रहे हैं कि हाँ वो जो अगर 4% जो है अगर वो 5% हो गया तो फिर इन्फ्लेशन 50% बढ़ जाएगी। दिस इज फॉर मी दिस इज लाफेबल बिकॉज एसेंशियली ऑल इट्स एन एडमिशन ऑफ इसके रियासत का सरमायादारों पे कोई कंट्रोल, वो उनको कह ही नहीं सकते कि भैया आप ऐसा करें। जो आपकी प्रॉफिट रेट्स है ना जो अभी ट्रिपल और क्वाड्रुपल हुई हुई हैं, बड़ी खुशी खुशी बता रहे हैं, देखिए ये सीमेंट मिक्स, सीमेंट वालों की 40% प्रॉफिट बढ़ गए हैं, इसके 300% बढ़ गए हैं, इनके 400%। तो यार आप जरा 300 से जरा 280% कर लें प्रॉफिट, यू नो, essentially that's what the argument should be. Yeah, there's a lot of room to raise minimum wages if you cut into the profits a little bit, which are already at historically high levels. And if, especially if you look at places like banks, which honestly, my personal view is they have no business have earning profits. Banks should be like minimally profitable if anything. एंड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बैंक से होती हैं। बैंक्स का काम लोन्स देना है प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए। सिमिलरली फॉर सो मेनी अदर सेक्टर्स आई थिंक वी कैन द effort should be to cut into the profit margin, and honestly वो कोई एक तो obviously regulation is a huge part of it, but ultimately that comes down to the collective bargaining power of labor, and that is why labor की जो cost है वो push on हो जाती है to consumers, because labor की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है उसमें। 1% से कम आपकी लेबर फोर्स यूनियनाइज्ड है, तो वो किस तरह जो है इन एनी वे कैन आर्ग्यू फॉर कैन गेट अ बेटर डील that ultimately hurts profit margins rather than hurting consumer costs. So I think these are structural problems. इनकी कोई, again, there are no easy solutions, but I certainly don't think ये जो अभी आई थिंक बहुत सारा फियर मॉन्गरिंग भी आने वाले दिनों में आएगी कि भाई अभी तो आपकी बस इन्फ्लेशन का सुनामी आने लगा है, और पता नहीं अब क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन होना शुरू हो जाएगी। मेरे नहीं ख्याल में, आई थिंक दोस फियर्स आर अ बिट अनवारंटेड। पहली बात तो आपको फिर एक तो प्रूव करना चाहिए कि क्या है एक्चुअली ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और क्या वेज ड्रिवन इन्फ्लेशन इस मुल्क में हो रही है, विच आई डोंट थिंक सो। एंड आई थिंक ऑब्वियसली एंड ऑयल प्राइसेस को भी अगर आप देखें, ठीक है कुछ बढ़े हैं पिछले अरसे में, but the projections are not that this will continue to rise indefinitely. Oil का वैसे भी I think one of the causes for optimism is कि oil की hopefully we're past the heyday and you are really, and हर जगह renewables के अंदर investment हो रही है, you're not really going to see the same kind of reliance on oil जो कि आप पहले देखते थे। पाकिस्तान में ज़ाहिर और टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल प्रोजेक्शन भी, I've been looking at oil price projections and they're actually expected to go down by the end of this year and going into 2022. So let's see. I think some of the expectations for this like massive inflation कि ऐसा उन्होंने को बजट ले आए हैं कि अब तो बस इन्फ्लेशन का सैलाब आएगा और easy money ट्रांसफर होगी, I think वो थोड़े unwarranted है। हाँ अलबत्ता we do really have to be wary of speculative consumer bubbles जिसका बहुत शदीद खदशा है, and I think that's what we really have to look into in terms of the nitty-gritties of this budget, and I think कुछ बहुत शदीद कुछ warning signs हैं इस तरह की, especially the construction amnesty, और उसके बाद जो अभी भी इन्होंने जो what it seemed like is like जो capital value tax के को I think 80% कम कर दिया है, and we have to see what the provinces also do with property taxes, but जो federal जो main जो capital value tax होता है
वो तो ठीक ठाक कम कर दिया है, एंड स्टॉक्स के ऊपर भी आई थिंक उन्होंने काफी कम कर दिया है। एंड अगेन आई थिंक जो रेवेन्यू मेजर्स हैं इस बजट के, दे आर एब्सोल्युटली रिग्रेसिव। मैं कैलकुलेशंस कर रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर जो है वो 58% से 63% पे चला गया। सो एसेंशियली ऑल द जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर भी रही हैं, दिस नॉट pinching the richest, actually richest को तो और amnesties दे रही हैं, and is ultimately going to fall on the poorest, ये जो data पे, calls पे, जो SMS पे, हाँ GST पे, sales tax is going to rise, मतलब इस projections जो हैं, I don't think they've increased the rate on many things, but the projections for how much sales tax is going to be next year is much higher. So basically projected tax increase इनका जो है अगले साल का, वो सारा sales tax के ऊपर है, और obviously कुछ petroleum levy की भी I think बात की जा रही है। आई थिंक 20-22 रुपए कह रहे हैं बढ़ जाएगी। Yeah, that I don't know वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे, लेकिन yeah, so I think the tax or revenue measures, they're pretty regressive. I don't think they're doing anything to change the structural जो tax की पाकिस्तान की तारीख रही है। And then and I think the key danger really is another kind of consumption-led Musharrafian style boom, जो कि services sector के ऊपर focus हो again। ये जो भी construction boom हो भी रही है, आप पिंडी में जाएं तो मैं तो देखता हूँ जीटी रोड पे कोई बेतहाशा मॉल्स बन रहे हैं, नए प्लाजे बन रहे हैं, नई लग्जरी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, नए स्काई स्क्रेपर्स इस्लामाबाद में आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे पैसा तो हॉट मनी मीशत के अंदर आया है, एंड दिस is just like for me like it's a repeat of the same old at a different scale and a different time, and I think we need to, that is what we need to be talking about। और अगर अभी उस पर करनी है बात कि okay, but what exactly do we need to change about this like developmental paradigm? And I So यही and I that सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि इसको करे कैसे। बट एक बहुत छोटा सा इसके बीच में एनेक्डोट आपने बोल दिया था इंटरनेट डेटा पे भी। इंटरनेट डेटा पे आई थिंक 5 रुपए पर जीबी बढ़ा दिया है, समथिंग लाइक दैट। जिन जिन लोगों की जानू है उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि 3 मिनट के बाद कॉल पे आपका टैक्स बढ़ जाएगा। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस मैंने 3 मिनट से ज्यादा किसी से फोन पे बात की है, सो आई एम गुड। बट जो जो ये ऑल नाइट फोन कॉल ये भी चल रही सुनने है, में आ रहा है, I'm not 100% sure of this, but people are saying कि जो WhatsApp calls हैं उसको भी they're going कैसे to कह start सकते हैं अनलेस दे कैन ओनली व्हाट्सएप। अगर आप वाईफाई पे कर रहे हैं, data के थ्रू। डेटा पे तो कर रहे हैं ना, डेटा पे तो देर इंक्रीजिंग पर जीबी। नहीं, but supposedly हमारा it said कि वो कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया जो डेटा वाला था। Calls and SMS का it seems like they're still going for it, but the internet data, mobile data वाला, वो supposedly that proposal has been आज rejected। आई थिंक शहबाज राना ने ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा है, अनलेस उसके बाद हुआ हो, उसमें ही इज आर्ग्यूइंग कि 5 रुपए आई थिंक पर जीबी बढ़ है, अनलेस उसके बाद से कोई और खबर आई हो। द रीजन आई पॉइंटेड दिस आउट इज यू शेड अ वेरी गुड केस स्टडी ऑन जियो, कि जियो ने किस तरह इंडिया में डेटा ऑलमोस्ट फ्री करके मार्केट कैप्चर करके वो वाज इट 40 मिलियन और 70 मिलियन सिम्स Yeah, फ्रॉम जीरो इन अ कपल ऑफ इयर्स। फिर एक yeah, मिनिमल कॉस्ट विच what was it like $3 for every 50 GB और $3 for 100 GB इस तरह करके। तो ये हम कितनी पेनी वाइज और पाउंड फूलिश स्ट्रेटेजी है हमारी। वुड यू से कि ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश स्ट्रेटेजी है कि हम डेटा पे सोच रहे हैं कि अच्छा लोग डेटा यूज कर रहे हैं टैक्स आ जाएगा, और डू यू फील ये थोड़ा ज्यादा सिनिस्टर है? दे फील लाइक के इंटरनेट पे डिसेंट बढ़ रहा है, ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, लोग पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो ये जरा एक फाइनेंशियल बैरियर डालें कि अगर हम बैन नहीं कर सकते तो जरा इसको महंगा yeah। तो करें कि कम लोगों के लिए एक्सेसिबल। डू यू फील ये सिनिस्टर है या डू फील लाइक इट्स जस्ट सिंपली के पैसे और आ जाएंगे हम डेटा टैक्स कर? I think yeah, it's likely a bit of both. I wouldn't say it's sinister unless wasn't seeing things like PMDA, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर आप यूट्यूब चैनल खोलने के लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट लाने लगे हैं, हाँ, ये मैंने एक और थ्रेड 5 साल जेल अगर आपने एनओसी के बगैर किस तरह का चैनल बनाया, and unbelievable things like that. So it does make you think, okay, they're actually just trying to like access to the internet को restrict करना चाह रहे हैं, access to social media restrict करना चाह रहे हैं, which is absolutely bizarre। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, दोनों पाँव को कुल्हाड़ी क्या बस काट दे के फेंक देने वाली बात है। It's just I think there's a bit of both। I think कि वो तो एक पाकिस्तानी की रियासत का हमेशा से अलमिया, तो ये भी है कि जहाँ चूसो जहाँ चूस सकते हो। कस्टम्स ही पे जाहिर है ये किसी न किसी तरह हमारी तो एक लानी दोनों, है। इसके जो दोनों मतलब निकलते हैं दोनों वैलिड है। That's not what I meant, but yeah, बट फिर बट हम इट फिर बट तो इट मान नहीं वर्क्स, पाएगा। बट इट Yeah, वर्क्स। yeah,
मैं तो खून चूसने की बात कर रहा हूँ, लेकिन बट इट वर्क्स ऑन बोथ लेवल्स। सच या तो तो दोनों वही है में। कि आप कस्टम्स में बस आप जबरदस्ती उधर ही चलती है, तो आप कस्टम से सारा रेवेन्यू आधे से ज्यादा उधर से आप निकाल लो, विद होल्डिंग से आप जितना सैलरी क्लास में निकाल सकते निकाल लो। अब लोगों ने डेटा तो इस्तेमाल करना ही है, तो उधर से जितना निकाल सकते हो निकाल लो। ये वही एक पुराना एक तरीका है, और ये कर रहे हैं, बट ये इस सेक्टर के साथ कर रहे हैं जिसके बगैर किसी सदी के अंदर ना तो। और आई मीन इट्स द मोस्ट लाफेबल पार्ट इज दिस लिटरली अ टैक्स ऑन एजुकेशन राइट नाउ। सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। 80, I think 90% of internet users, the broadband users in this country, or even more than 90, I think, is mobile internet. और आप उसको अगर टैक्स करेंगे तो आप बेसिकली स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत का तालिब इल्म है तो आप छोड़ दें तालीम को, स्कूल तो वैसे ही बंद है और ऑन ऑफ बंद ही रहना है, तो आप जो है मोबाइल पे भी इतना मुझे दुख पैसे होता नहीं है। है तो आप तालीम नहीं ले सकते। इट्स Recently somebody नॉनसेंस। tweeted that finally I have internet in Gilgit Baltistan. I was like, हम इतना रोते हैं कश्मीर के साथ, ये लोग ये कर रहे हैं, हमने अपने मुल्क में जहाँ स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल हो गए ऑनलाइन क्लासेस, उनको हमने इंटरनेट तक नहीं प्रोवाइड किया था। या वो तो यस एब्सोल्युटली। जब आप तालीम के इस मुल्क में कहानियां पढ़ना शुरू करें, मैंने जो कुछ ऐसा काम किया है, तो it's just nuts, man. There's no secret, there's no surprise कि we are in the situation that we are today. And रियासत की जो प्रायोरिटीज हैं वो अभी तक आई थिंक किसी हद तक आई थिंक पिछले 10 साल में कुछ अवेकनिंग हुई है to what we've been doing, but it never nearly goes far enough, and there are always forces pulling us back. And I think this tax on the internet is just one of those same things. और अच्छा, ये अगर PMDA जैसी अथॉरिटी भी आ जाए, so this will really set us back, I feel, another decade, हाँ, जो किसी ने कुछ ट्विटर पिछले पे 10 साल शिकायत की हुई थी आपके साथ कि आपने ये जो जियो का सक्सेस मॉडल ट्वीट किया है, ये तो आप क्रोनी कैपिटलिज्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। में। Yeah, I mean, I think like I said before, for like certain kinds of I think technologies, for certain kinds of services, I मेरे नहीं नजदीक के कोई बुनियादी तौर पे इसमें कोई मजायका है कि प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर करेगा, as long as रियासत उसको रेगुलेट कर सके, रियासत एक्सेस को एक्सपैंड कर सके. So yeah, I really don't think that in the current state that we are, there should be any issue with it. I think what is more important is okay, you need to have this very, very strong and massive state role in both in certain areas, the productive sectors of the economy, and to ensure that the private sector hai, that is actually investing in areas जिनसे पूरी मईशत को, मजदूरों को और ओवरऑल आपकी एक्सटर्नल पोजीशन को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है. आप एक सॉवरेन इकोनॉमिक पॉलिसी और एक सॉवरेन इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी आप अपनी उसके जरिए बना पाते हैं. So I think, yeah, and I think again, I feel like these are incremental steps that need to be taken, and I really, really think the left approach cannot be either a revolution or nothing. You know, like that's a very foolhardy strategy. I think it's opens the doors for just fascism to just take over. और आप and I think a lot of people left में करते हैं कि नहीं ये तो इलेक्शन में कहाँ पार्टिसिपेट करना ही है, तो समाज-दरान निज़ाम को फ़रोग़ देना है या किसी पॉलिसी डिबेट में हिस्सा लेना ही जो है आप इस निज़ाम को पहुंचा सपोर्ट कर रहे हो, उसको सस्टेन कर रहे हो. And I think that's silly. I think obviously there are multiple positions. I absolutely shouldn't be कि अच्छा अभी जो हमारी पॉलिसी ज़रूरियात हैं वो जो हैं that should be revolutionary strategy for the next 20 years. That's obviously not the point. But for now, this within the constraints that जो अभी exist करते हैं, I think you need to take certain steps, and then over the long term, there are certain other steps. And I think in the long term, तो हमारी imaginary बिल्कुल फर्क होनी चाहिए. And I think we need the kinds of revolutionary things that we need. I think ultimately, I think 40-50 साल बाद तो I'm very hopeful कि all these debates that we have about क्या education private होनी चाहिए, public, क्या आपको लोगों को social protection देनी चाहिए या नहीं, क्या health human right होना चाहिए नहीं, these will seem like very laughable things that we used to talk about कि क्या हम असल में दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में बात होती थी कि पैसे हों तो आपकी सेहत की कोई सहूलत होनी चाहिए या आपको सालाना इतने लाखों का खर्चा करना चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए आपके पास $40,000 होने चाहिए. You know, these are weird idiosyncrasies जो कि हमने develop कर लिए हैं in the course of our process of development. So I think over that time, so over time ये सारी चीजें will get resolved in favor of what we're arguing. But यूएस में you चालीस need हजार certain डॉलर steps to लगते get हैं there. 40,000 डॉलर लगते हैं बच्चा पैदा होने के लिए यूएस में। Yeah, absolutely. Something and more I've heard like crazy horror नहीं, stories about
people who went there. I mean, obviously you can do it illegally. आप किसी उस तरह के. नहीं, I think वो insurance भी तो would probably cover a big chunk of it. हाँ, I'm talking about अगर आप insured ना हो, Oh, और अगर आपने बच्चा बनाया ना, obviously it's like tens of millions of people in the US who are not insured. तो आपके लिए literally फिर आपको अस्पताल में जाके ये करना पड़ता है. And I know, obviously I know friends who have delivered, and even with insurance, I think आपको several thousand or if not कोपे तो more होगा आपका ना, किताब. 10-20% जो भी जितना भी हो उसमें. Yeah. And yes, you're absolutely right. Noam Chomsky was on a podcast. और कुछ बहुत ही, and ये privilege take है थोड़ा, कुछ बहुत ही woke लोग थे. I forgot, it's a very popular woke podcast. वो ये argue कर रहे थे कि it's better for the left for Trump to do a second Yeah, I term agree in with that. office, क्योंकि अगर ट्रम्प दूसरी दफा आएगा वो चीजें इतनी तबाह कर देगा कि ऑप्शन आपके पास सिर्फ रेवोल्यूशन रहेगा. और नोम चॉम्स्की ने बहुत अच्छी Yeah, बात की accelerationism. कि भाई अगर ये हो भी गया, you're leaving millions by the wayside. For your revolution, you're willing to sacrifice millions. कि Biden may not be perfect, लेकिन उसके incremental reform से millions की जिंदगी जो incrementally थोड़ी बेहतर हो सकती है अगले 5 साल, you're sacrificing them. So maybe जो ये कहते हैं revolution or nothing, it's a privilege take slightly, at least that's my understanding of that. Education की आपने बात की, शफकत महमूद ने बड़ा celebrate किया कि हमने तो बहुत ही ज्यादा increase कर दिया है. डू यू फील कि वो इंक्रीज इतना ज्यादा इसलिए लग रहा है बिकॉज दे स्टार्टिंग फ्रॉम अ लो बेस, कि पीएमएलएन के बाद इन्होंने हायर एजुकेशन कम किया, और इतना कम करने के बाद अब थोड़ा बढ़ा भी रहे हैं, तो वो परसेंटेज वाइज बड़ा मॉन्यूमेंटल इंक्रीज लग रहा है, बट कुछ भी नहीं है. आई थिंक ओवरऑल एजुकेशन हायर एजुकेशन मिला के 1% भी नहीं है, if I'm not wrong. Yeah, I think higher education wise, so they have just now returned to the 2017-18 levels. It's literally, I think, the same. And obviously inflation के हिसाब से आप देखें तो काफी खास पहले से कम है. तो उस हवाले से तो I think कोई real higher education में तो नहीं हुआ increase. And really, I don't think this is one area in which the government has demonstrated. Education in general, I think this government has Health been also. disastrous. Yeah, it's been disastrous on every level, whether you talk about spending तो चलो वही levels more or less maintain या हल्के से कम हुए हैं from पिछली government के levels, but जो curriculum wise और जो in terms of freedom of thinking and like universities के अंदर जो हुआ है, लोगों को जिस तरह निकाला जा रहा है, जो उलमा और ये जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को जिस तरह पावर दिया जा रहा है, पब्लिशर्स के लिए और मुश्किलात पैदा की जा रही हैं ऐसे मुल्क में जहाँ पे पब्लिशिंग इंडस्ट्री वैसे भी ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मतलब देयर इज बेयरली अ पब्लिशिंग इंडस्ट्री इन दिस कंट्री. उसके ऊपर और ज्यादा फीस और ज्यादा रिव्यू कराने के लिए और ज्यादा हूप्स टू जंप थ्रू, एंड इट्स जस्ट डिजास्टर्स. आई थिंक उसके ऊपर तो there are no two ways about it. There's no, forget paradigm shift. It's just like regression, more and more regression to things that will take very, very long to recover from. एनाटमी So के डिजाइंस डायग्राम्स बैन कर दिए हैं कि बायोलॉजी की किताब में एनाटमी का डिजाइन नहीं हो सकता क्योंकि वो नंगी बॉडी है, वो थोड़ी हम दिखा सकते हैं. सो खुदा जाने अब डॉक्टर जो बनेंगे वो कैसे, उनको क्या पता होगा पैंक्रियास कहाँ है और स्टमक कहाँ है, कि खुदा ना खास्ता किसी कोई टर्न ऑन ना हो जाए पैंक्रियास का डायग्राम देखकर. it's not like we didn't know this would happen, you know. Yeah. We've been through this, man. हम सब इस मुल्क में पड़े हुए हैं. For 5 years उन्होंने जेआई को दे दी थी और 5 साल में रोता रहा कि ये देखें क्या कर रहे हैं, देखें क्या कर रहे हैं. Didn't matter. Yeah, look, this is already a country जहाँ पे आप literally you cannot talk about कि लोगों बच्चों को sexual reproductive health education कुछ बुनियादी दी जाए without having like fatwas against you. और उस मुल्क के अंदर आप जो है पूरा तालीमी करिकुलम की अप्रूवल और नॉन रिलीजियस किताबों की अप्रूवल आप उसी एक क्लर्जी को दे रहे हैं जिसका यही किरदार रहा है पिछले. एवरीवन न्यू इट, सबको पता था ये होगा अगर आप ऐसी कुछ चीज करेंगे, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स प्लेइंग आउट. एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि इसको पुश थ्रू किया गया using progressive language and like progressive terminology and progressive call out, supposedly woke terminology. और उसको और प्रवेश हुआ है जब जिसने जब बोला and he was spearing the charge against it. And I do think he made some mistakes. I think he could have used slightly different language. He could have like spoken in a different way. And I think it was just like his frustrations coming out because he's been fighting this battle for donkey's years, mostly alone in many respects. And Joby and I have ideological differences with him. I'm not a liberal, and I don't think that's like the fundamental contradiction of this country. उनके ज़हन में तो यही है बुनियादी तज़ाद इस मुल्क का, मेरे नज़दीक नहीं. लेकिन still I do understand the dangers of handing over education to these groups. और
simply pointed that out, and I think उसके ऊपर जिस तरह से उसका defense किया गया, और and I think it was very crucial because that was the moment when you could have just like shouted this down and said, okay, no, no, no. And a lot of educationists were saying it, जिसका भी तालीम के शोबे से वाबस्तगी किसी हद तक थी, उसने कहा था कि यार नहीं, this is not what we need to do, this is not what education has been saying, इतने अर्से से। और उस वक्त था कि आप उसको रोक देते, और उस वक्त मरियम चुगताई को एक पता नहीं तरक्की पसंद इसकी एक शक्ल बना के, फेमिनिस्ट फेस बना के इस चीज़ को पुश किया गया है, and now we're like stuck with this baggage, and I don't know. I still think there is like absolutely a need that this should be one of our priorities going forward, कि get roll back the essence thing. सिंध में शुक्र खुदा की उन्होंने नहीं इसको रोल आउट करवा रहे इस साल। आई थिंक प्राइमरी लेवल्स के ऊपर शायद इनका प्लान है कि उसको लेकर आना है, एंड yeah, so I do think there still needs to be resistance, but it's just disgusting जिस तरीके से इसको using woke language for incredibly regressive ends जो किया गया है, and I think ये एक danger है कि पूरी दुनिया में नजर आ रहा है ये किस तरह किए जा रहे हैं। I think it's something we need to seriously think about. मैंने मरियम चुगताई को बुलाया हुआ है पॉडकास्ट पे, आई हैव नॉट हर्ड बैक, आई एम विलिंग टू गिव हर अ फेयर शॉट एंड लिसन कि एक्चुअली क्या है, बट मसला ये है कि वो भी डंबिंग डाउन ऑफ द आर्गुमेंट है ना। आप प्रोसीजरल पॉलिसी लेवल पे वो चीज आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट कि सिंगल नेशनल होना चाहिए, नहीं, कौन कर रहा है और कैसे करेगा, इसके बगैर आप आइसोलेशन में बगैर कॉन्टेक्स्ट ये चीजें कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आप देखें कि किस तरह की पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या चीजें करिकुलम में डाल रहे हैं, पाक स्टडीज देख लें, बायोलॉजी देख लें, फिजिक्स देख लें। वो फिजिक्स की एक किताब का पेज आया था जिसमें लिखा हुआ था अल्लाह ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये लिखना चाहते हैं आप लिख लें, बट उसके बाद जो साइंस कहता है वो भी चीजें तो बताएं ना कि अच्छा क्रिएट कर दिया है, बट क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, ये हुआ, वो चीजें भी तो बताएं। बट इफ यू जस्ट राइट दैट लाइन एंड बी डन विद इट, आप क्या है, वही ऐसे भी लोग बनेंगे ना कि जो पानी पे चलने वाले जहाज बना रहे हैं, गाजर पे चलने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, वही आपके फिर हीरोज बन जाएंगे। सिंस आपने ये वेपनाइजेशन राइट की बात कर ली है अभी, फिर दोस्त आपा, एंड इसमें मैं भी अब अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिमी फैलन को जिस तरह काफी क्रिटिसिज्म आया था कि ही रफल डोनाल्ड ट्रम्प्स हेयर, और उसमें एक डिस्कशन हुआ था यू नॉर्मलाइज्ड टायरेंट, तो वो नो झपियां नो पपियां ईद के ग्रीटिंग कार्ड्स पे चल रहा था, एक जोक सा बन गया है कि फिरदौस आपा कभी बैट लेके खड़ी होती हैं, कभी ट्रक चला रही होती हैं, तो शी सॉर्ट ऑफ बिकम दैट कॉमिकल फिगर। तो मैं कल्चरली भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया इन क्रिएटिंग दिस मॉन्स्टर। एक पार्टी जो सबको गालियां देती है, सबको करप्ट कहती है, सबके बारे में जितनी नाजेबा हैशटैग ट्वीट करके ट्रेंड करती है, आज पार्लियामेंट में तस्वीर आई थी कि लैया से जो उनके पीटीआई के एमएनए हैं वो बिल्लो बिल्लो कर रहे थे, पूरी पार्टी हंस रही थी। उस पार्टी की स्पोक्स पर्सन फिरदौस आशिक अवान को जब कहा जाता है करप्ट, तो वो थप्पड़े मारना शुरू कर देती हैं और फिर कहती हैं मैं तो लेडीज हूँ। आज तक मुझे समझ नहीं आया था वुमेन कार्ड क्या होता है, और जब लोग कहते थे यू आर प्लेइंग वुमेन कार्ड में हंसता था। रीमा की बहुत अच्छी पॉडकास्ट भी शुरू हो गई औरत कार्ड के नाम से, लेकिन ये शायद उनका मतलब था, ये जो मैं तो लेडीज हूँ, आप थप्पड़ मार रही हैं, आप उनको बदतमीजी कर रही हैं उनके साथ, और फिर यू टर्न अराउंड एंड सी लाइक ये औरत की इज्जत नहीं कर रहे। मे बी दिस इज व्हाट दे मीन बाय द वुमेन कार्ड। सो जो राइट की वेपनाइजेशन है ऑफ दीज आइडियाज, मिसोजिनी, अभी मैंने रिसेंटली किसी को इडियट भी बोल दिया था क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहा था कि असद अली टूर को सही मारा गया, एंड दे वर लाइक देखा इसने इडियट बोल दिया, एंड थैंक यू अमार फॉर सेइंग कि वो इडियट ना बोले तो क्या बोले ऐसे इंसान को। सो ये राइट ने जो लिबरल आइडियाज वेपनाइज कर दिए हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Yeah, I think this is like a global problem. It's a growing problem, and I think this is something हमें आने वाले वक्त में काफी ज़्यादा इससे deal करना पड़ेगा. And it's a monster I think we've had a part in creating. I think एक तो obviously, and you see this in the form of ये यहाँ पे हो रहा है, सामने PTI का जिक्र किया, वो तो बड़े से कह रहे हैं, they do it whether it's in terms of feminism के हवाले से भी करते हैं, they do it in terms of left ideas and classism. लोग जो कोरोना के शुरू के दिनों में तो एक बिल्कुल ही वेपनाइज किया गया क्लास को कि in which you're terming some kind of giveaways to the rich as some kind, or concessions to the rich as some kind of कि हम तो गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, and many other issues. Religion. And India में Hindutva is doing this really well, where they're using like this victimization of the majority Hindu identity, एक हिंदू फोबिया की अब बात करते हैं, और वेस्ट के अंदर हिंदू फोबिया है, और हमारी पॉलिथिज्म को इस तरह देखा जाता है, और ये मुस्लिम इन्वेडर्स हैं और असल ऑपरेसर्स तो ये लोग थे,
और जाहिर है अमेरिका में ट्रम्प जैसे लोगों ने और वाइट नेशनलिस्ट ने वाइट आइडेंटिटी की विक्टिमाइजेशन के नैरेटिव्स अपने बनाए हैं। एंड आई थिंक ये यकीनन हो रहा है, और इसके ऊपर जो आई थिंक फॉर मी इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू आई थिंक अंडरस्टैंड कि I think part of this obviously completely cynical जो right wing का एक completely जो है बेबुनियाद कि मैंने तो मारा, किसी को मुक्का मार के कहना कि असल में victim तो मैं हूँ. I mean a lot of this is like it's like a farcical misrepresentation of what actual sort of like identity politics or what actual sort of victimization is. आप ट्रम्प भी इस तरह कहना कि जी असल में तो गोरे इस मुल्क में हैं victims. It's a farce. You dig into it and you actually realize, okay, no, in general, so that's not true. I mean, you can find some instances. Obviously, there's a white working class and everything, sure. But in broad terms, the white folks are better than better than non-white folks. Similarly, in India, broadly, yes, Hindus are better off than other communities, and especially caste Hindus. higher जो caste. सबसे ज़्यादा हिंदूफोबिया कहते हैं. And similarly other places. तो ये ultimately तो है तो एक majoritarianism को एक victimization का रंग में. लेकिन I पाकिस्तान think में भी सुन्नी मुस्लिम जो एक अहमदी फ्यूनरल को अटैक करते absolutely हैं कहते हैं कि और हाँ फिर ये कहते हैं हम अहमदियों के हक विक्टिम में हैं। बात करना तो आप हमारे religious rights को deny कर रहे हो. या पंजाबी जब कहते हैं कि आप PTM ये जो गालियाँ जो दे रहे हैं इससे तो हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं या हमारी शनाख्त जो है उसको ठेस पहुंच रहा है. तो ये अब इन रियलिटी तो ये मेजॉरिटेरियन डिस्कोर्सेज हैं जो ये ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यानी कर रहे हैं, और ये ऐसे हमेशा से जाहिर है कि किसी हद तक कोशिश तो करते थे इस विक्टिमाइजेशन की. लेकिन अभी 21वीं सदी के इस दौर में इस आइडिया की करेंसी बहुत शदीद है. द आइडिया ऑफ बीइंग अ विक्टिम, ऑफ बीइंग अ मार्जिनल आइडेंटिटी, ऑफ बीइंग समवन जो अप्रेस्ड है, उसकी एक सोशल करेंसी के अंदर बहुत शदीद इजाफा हुआ है पिछले कुछ 10 साल में. एंड आई थिंक ये एंड आई थिंक उसको लिबरल तबके पे इल्जाम जाता है ये करने में. yeah, I think broadly this is definitely something that we have a part in. I think not just the liberal, I think it broad from center left से left तक ये एक तरह की सोचने की एक तरीका है जिसको फरोग दिया है हमने. एंड आई थिंक ये जाहिर इसकी तारीखी वजूहात भी हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इसके गिर्द. आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस डू विद पोस्ट कोल्ड वॉर, जब एक ओवरऑल सपोजिटली द आइडियोलॉजिकल डिबेट बिटवीन कैपिटलिज्म सोशलिज्म सेटल्ड, तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस जो बच के जिसके गिर्द लोगों की सवाल, लोगों की बहबूद के सवाल, वेलबींग के सवाल जुड़ सकते थे, were really questions of recognition, जो कि बच के रिकग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन कि अब तो चलें निज़ाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन उस निज़ाम के अंदर ब्लैक्स की और माइनॉरिटीज़ की और इस तरह की मुख्तलिफ मार्जिनलाइज ग्रुप्स की जगह हमें हमारे लिए होनी चाहिए, और हमें उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और उनकी पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. एंड आई थिंक ये बहुत सारा आई थिंक लेफ्ट एकेडमी ने इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया. The whole critical turn in left discourse, जो पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो आइडियाज थे, the whole idea कि हमें instead of like this हम मेटा नैरेटिव्स ऑफ क्लास स्ट्रगल में नहीं अब यकीन रखते, हमें बस मार्जिन्स को देखना है, और जो लोग मार्जिन्स में हैं हमें उनको आवाज़ देनी है और उनको इनकॉर्पोरेट करना है और उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है. Politics just became, and politics on the left essentially became आइडेंटिटी reduced to that. पॉलिटिक्स became हाँ, reduced. that's what you call identity politics, whatever इसको आप जो भी नाम दें, कि बस आपको recognize होना है, आपको represent होना है, आपको अपनी जगह बनानी है. With women it was this whole idea, वो शेरिल सैंडबर्ग जो फेसबुक वाली है उसका lean in, just become a part of the corporate machine, और बस आ जाओ तुम, अगर इसमें एंटर हो जाओ, पॉलिटिक्स में आ जाओ, हिलरी क्लिंटन, आई एम विद हर, या जो कि बस आप अंदर एंटर हो जाए, get a foot in the system and things will get better. And similarly with anti-racist politics in the US, कि भाई ओबामा बन गया तो भाई रेसिज्म खत्म होगी, सदर बन गया अब तो क्या, अब तो रेसिज्म का कोई वजूद नहीं रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक्स की नुमाइंदगी बढ़ा दें, हिस्पैनिक्स की नुमाइंदगी बढ़ा दें. अब वही हिस्पैनिक्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रम्प को भी वोट देना शुरू हो गए हैं, स्ट्रेंजली इनफ. वो तो And bigger discussion I think with Cubans and yeah, of course. socialism, No, but no, Kamala fine, Harris is a American, great example. yeah, जो yeah, of इतना course. सेलिब्रेट किया हमने, हमारी बेटी, उसका कल परसों बयान आया है कि इमिग्रेंट्स मत आओ, Don't come in. आप के माँ बाप इमिग्रेंट्स हैं.
आपके माँ बाप it's crazy. इमिग्रेंट्स है, कमाला। यही तो है, it's like Kamala Harris is like the क्या कहते हैं ना उसके, the place where identity politics now has gone to die. Okay, she's just become like this symbol, Indian mother, like Indian parents and black parents, and Jamaica se bhi hai, और यहाँ से भी है, like liberal, and, औरत भी है। but she's also a cop, and she's also like a complete like emissary of empire, and like हर चीज उसकी, उसका करियर देखने वाला है, किस तरह उसने इन्हीं इदारों को सपोर्ट किया, but at the same time she can now pass herself off as a Black Lives Matter symbol somehow, क्योंकि उसने भी किसी प्रोटेस्ट में गई थी उसके, even if बहुत she's been putting बेहतरीन, black people into prison all her lives. बहुत बेहतरीन मीम है ना कि बॉम्ब्स गिर रहे होते हैं, लोग सैड हो रहे होते हैं, फिर बॉम्ब्स गिर रहे होते हैं तो एक बाप अपने बेटे को बोलता है नहीं नहीं ये एक औरत वाइस प्रेसिडेंट ने गिराए हैं, ये तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। Yeah, तो ये and I आइडेंटिटी think so, like just to complete what you're saying, like I think ये जो politics of recognition and representation जो है, इसको obviously I think this idea of the social media के दौर में obviously this has, it's given it space to flourish, where like everybody has an identity and their own individual identity. There's very little on ground collective politics in terms of like parties तो खत्म हो चुकी थी और left की सियासत तो उस तरह से नहीं रही थी, तो ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स खत्म हो गई, एंड बस आप एक फ़र्द हैं, और आप एक फ़र्द है, और आपकी आई थिंक शनाख्त की अहमियत है जब आप एक पीओसी होंगे, या जब आप एक किसी ऐसे तबके से ताल्लुक है, या ऐसी कौम से आपका ताल्लुक है, या आप तो इवन मुस्लिम होने की भी अब बहुत ज़्यादा आई थिंक पिछले ट्रम्प के बाद से तो एक बन गई है कि भाई इफ़ यू आर मुस्लिम यू आर इम्प्रेस्ड, एंड नाउ दे आर मुस्लिम व्हाटएवर पीओसी जिनका अपनी एक ऑपरेशन की कहानी है, एंड तो इस चीज को इस एटमाइज सोशल मीडिया के उसके अंदर आई थिंक इस चीज को फरोग बहुत दिया गया है, और रिकग्निशन की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा जगह मिली है, एंड आई थिंक so here's the thing, I get it. I think it's natural that this had to happen. These are communities, groups, nations, races, genders that have been marginalized and oppressed. एक objective reality है to their oppression. When a lot of leftists say this, this is identity politics, and we can't be doing identity politics as left. I get that, but again, I think we can't also make the same mistake of जो identity politics वालों ने किया, जो postmodernists ने किया, post-structuralists ने किया, throwing the baby out with the bathwater, कि भाई हाँ, अब we're not doing class politics anymore. We're not doing meta narratives anymore. We're not going to be talking about socialism anymore. So उसी तरह I think look, the thing with identity politics is definitely there's serious and structural problem with it, both in terms of its internal constitution, कि आपको ये अंदरूनी तौर पे इतनी ज़्यादा एक स्पेसिफिक आइडेंटिटीज के अंदर बॉक्स इन कर देती है, जिससे फिर आप बाहर नहीं निकल पाते, जिससे आप एक सॉलिडारिटीज एक ब्रॉडर नहीं कायम कर पाते, जिससे आप सिर्फ अपने मसले को ही तरजीह देते हो, बाकी लोगों के मसले आपके लिए अहमियत नहीं है। और ये आप पाकिस्तान की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में बहुत देखते हैं कि बलोच अलग लड़ रहे हैं, पश्तून अलग लड़ रही है, सिंधी अलग लड़ रही हैं, और वो एक दूसरे पे भी तनकीद करते रहते हैं अमूमन। तो ये, और इवन ये भी मसला है, also how it often then also gives birth to alternative forms of the weaponization of this kind of identity of identity politics. तो ये दोनों जो इसके अंदर मसले हैं ये बड़े शदीद हैं, we need to figure out what to do about this, but at the same time identity politics and the movements associated with them are currently what is driving the left in many ways. It's they are the engines of the left. अगर आप जहां भी देखें, अमेरिका में कौन सी तहरीक, what was the largest protest that ever happened in the history of the United States last summer? It was Black Lives Matter. कोई अपराइजिंग अमेरिका में इतनी बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं जो हुई after the killing of George Floyd. The feminist movement in the world right now, कभी दुनिया की तारीख में इतनी major mass level, global level of feminist consciousness or solidarity, I don't think हुई है. I mean, there have been, of course, waves of feminism in the past, but they haven't really been as universal and as global and as like obviously, and so social media again has a lot to do with this. These discourses can be shared across cultures and countries, and you can debate them and fight over them, and उसकी वजह से एक चीज पैदा होती है। पाकिस्तान में भी देख लें जिस तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट इमर्ज की है पिछले 4 सालों में, जो कि आप 5 साल पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कुड बी हैव इमेजिन कि इस तरह मैस प्रोटेस्ट औरतों के ऑन प्योरली लाइक रियली लाइक रेडिकल आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म, सेक्सुअल पॉलिटिक्स की भी बातें हो रही हैं, सेक्सुअल फ्रीडम की भी बात हो रही है। दिस वाज अनथिंकेबल just a few years ago. It's and obviously still in many parts of this country unthinkable.
And I think obviously the movement also needs to think about, especially given the kind of backlash it's encountered, कि किन चीजों को prioritize करती है, नहीं करती. Nonetheless, these movements, and then again, the movements like the PTM ने जिस हद तक इस मुल्क में possible किया है, रियासत के कैरेक्टर के बारे में बात करना, जबरी गुमशुदगी के बारे में बात करना, बमबारी के बारे में बात करना, कलेक्टिव पनिशमेंट के बारे में बात करना, कौमी नाबराबरी के बारे में बात करना, ये चीज़ें नहीं थी मुमकिन आज से 5-6 साल पहले. So identity politics, for all its faults, all its problems, is nonetheless एक engine है. It's what has created so much of the grounds for the left. We see, even if you're talking just about the socialist left, हमारे पास भी जो लोग आते हैं स्टूडेंट मूवमेंट्स के अंदर और मुख्तलिफ इवन फेमिनिस्ट सियासत के अंदर और ट्रेड यूनियन सियासत के अंदर, काफ़ी सारे लोग आते हैं उस चीज़ को देख के, उस एक इनिशियल आइडिया ऑफ दैट आइडेंटिटी जिसके जरिए बहुत सारी खवातीन आती हैं प्योरली एज ओके बिकॉज दे एक्सपीरियंस पेट्रियार्की एज अ वुमन, and then eventually a lot of them come and they say okay, this will be our this feminism is our politics, but our politics is also other things. So that is also in many ways being fueled by these movements. So I don't think it's about doing away with identity politics, absolutely not. But I do think it's about interrogating कि हमारी 21वीं सदी में लेफ्ट की सियासत की बुनियाद क्या होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए. And I think what the key thing for me, and I've thought about this a lot, and मैंने बहुत सारी सोचा भी है, बात की है, done personal explorations around this. I think one of the key issues is that a lot of identity politics is based around the idea of grievance and of pain, and and the idea कि हमारे ग्रुप के साथ, हमारी शनाख्त के साथ ये जुल्म किया गया, नो, and उस जुल्म का हमें इज़ाला करना है, उसके लिए हमें we need justice for that. So ultimately these are justice movements, right? That's the whole social justice warrior, that's where it comes from. Okay, these are movements for justice and they're based around some kind of a foundational primordial grievance or pain जो हुई, जो गलती हुई है, and which racism के केस में हो, it's about slavery and apartheid, and उसके बाद जो criminal justice के जरिए जो कुछ हुआ, feminism के obviously patriarchy and the appropriation of their labor, and then all other social institutions जो बनती हैं, and sexual abuse and everything that comes with that, and then for other ethnic nations it's similar kinds of experiences of pain and trauma जिनसे वो गुजरे हैं, जिनके नतीजे में वो शनाख्त बनती है और वो उस शनाख्त की गिर्द एक तहरीक बनती है और उनके मुतालबात आते हैं. Now these grievances, all this pain, I think this is real, and this needs to be acknowledged and this needs to be addressed. There is no two ways about this. Completely, I agree, and this has to be a fundamental, central part of our politics. Whether in the case of race or gender or sexuality or nationalism, whatever it is. But I think the key difference from where I think the left needs to come from is that pain or that basis, that exploitative relationship or that grievance, that trauma cannot become the entirety of your identity. And I think the mistake we make is जब वो उस दर्द को, उस grievance को आप अपनी पूरी शनाख्त बना देते हैं कि मैं ये हूँ, कि ये जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं हूँ ही यही इस जुल्म की पैदावार, and that's all I am. And I think even if no one explicitly says this, I think implicitly that's the mistake we make in our movements. There's so many of these movements कि हम कहते हैं कि भाई ये हम foundationally हम ये हैं. And I think, for instance, अगर आप अमेरिका में देखें जो anti-racist movement है, and I think there's a lot of critiques जो उसके बारे में आ रही हैं, some of them from the right, some of them from the left, which I to some extent agree with, कि there's this certain kind of essentialism जो कि उस anti-racism की गिर्द अब आना शुरू हो गई है, whether it's in the shape of like things like the 1619 project, right? जो कि this new understanding of new retelling of American history, which reduces it basically to slavery itself, कि जब American history शुरू होती है, जब slaves लाए जाते हैं, and then the rest of American history is basically about how it enslaves and how it uses that slavery to develop, and how that's constitutive of both American identity, white identity, and also black identity, and how it is. And then there's this, that's just obviously one academic project, but उससे गिर्द एक जुड़ी हुई एक पूरी, and what I think a lot of people call critical race theory, which essentially creates these very like these boxes of
this is the white man, this is the white devil, oppressor, whatever, this is the black, and this is the battle between. And if you want to fight this battle, essentially there's this whole idea of you have to be anti-racist, and anti-racist means dismantling all the remaining elements of white supremacy, which all of that I agree with. Obviously, white supremacy should be dismantled. उस पर कोई वज़ायका नहीं है. लेकिन जब आप उस अपनी शनाख्त को ही और दूसरे किसी ग्रुप की भी शनाख्त को एक एसेंशियल कैटेगरी के अंदर जब बॉक्स कर देते हो, तो then there is not really, then I think, and the issue is not even कि आप बस आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं या आप कोई कुछ आप the white thing is obviously you're making us out to be evil and आप सारा कुछ हमारे ऊपर डाल रही हैं और हम तो इतने बुरे नहीं हैं. That's not the point for me, to be honest. They've done a lot of wrongs that they need to account for. I think that they continue to do that entire sort of hegemonic edifice of white supremacy and so many other things, and patriarchy. For me, the key question is, आप उस trauma को resolve कर रहे हो? Are you actually healing from that trauma जो बुनियादी जिसके गिर्द आपकी सियासत है, या are you in many ways reproducing it, and are you creating the circumstances in which that trauma will again be created in multiple ways, whether it's through some kind of repression, whether it's through like the recreation of new kinds of white supremacy and politics of recognition from the right, or whether it's in like these essentialists teaching your kids कि हाँ आप तो एक slave थे. That's essentially what your identity is. Yeah, even, and it happens many times in terms of like with the gender debates as well. And कि ये मर्द कौन है, हमारा मर्दों से क्या ताल्लुक है, हमें तो बस अपनी अलग से करनी चाहिए. There are many feminists who have this view कि भाई all men are like this. And I honestly, मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझे कहें, I have no issues. आपने गाली देनी है, I'm not saying not all men. That's absolutely not what I'm saying. I have no issue. I understand. Women are pissed. औरतों को बड़े शदीद हमसे इख्तिलाफात हैं और वो बड़े जायज़ हैं. हम सब के अंदर एक पिदर शहारा मर्द बसता है जो जितने मर्जी हम तरक्की पसंद हो जाएं, वो निकलता है हमारे अंदर से किसी ना किसी पॉइंट पे या एवरीडे लाइफ में. I totally get it. My question is about सियासी strategy. Is about political strategy. क्या एक अकेली feminist तहरीक जो कि बिल्कुल ही engage नहीं करती और हलकों के साथ, तरक्की पसंद हलकों के साथ, कौम परस्त हलकों के साथ, और जेंडर माइनॉरिटीज़ के साथ, ट्रांस कम्युनिटी के साथ और उनके साथ, और बस कहते नहीं मैं तो ये औरत हूँ और मेरी राजनीति बस इसी कहते, क्योंकि no one who doesn't have the body of a woman or has the experience of a woman, उनको नहीं पता हो सकता कि क्या है, which is a lot of what identity politics looks like these days. तो क्या आप actually इस मुल्क में right wing जो पूरा onslaught है उसके साथ उससे आप लड़ सकते हैं? क्या इस मुल्क में जहाँ पे एक anatomy का diagram बनाने की इजाज़त नहीं है, forget sexual and reproductive health education, क्या आप उस मुल्क के अंदर कोई आप gender equality को सिखाने की तरफ जा सकते हैं, जहाँ एक 5 साल की बच्ची के ऊपर भी हिजाब के बगैर उसकी शक्ल नहीं आप किसी स्कूल की किताब के अंदर डाल सकते, उधर भी आपको उसको सेक्सुअलाइज कर रही हैं? क्या आप इस मुल्क के अंदर कोई तसव्वुरात बदल सकते हैं मर्द और औरतों के बारे में, लड़कियों और लड़कों के बारे में? एंड जब आपके ऊपर, जब ऐसे मुल्क में जहाँ आपके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम एक औरत की मार्च लगाने और मार्च करने के ऊपर, आपके ऊपर तौहीन रिसालत और आपको कत्ल और मरने मनाने के, दे आर लिटरली, यहाँ पे ख़वातीन हैं फेमिनिस्ट जो भी एक्साइल में, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ माइन आई नो, जिनको डेथ थ्रेट्स की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़े. तो क्या इस मुल्क में आप अकेले ये कर सकते हैं, इन कुव्वतों के साथ लड़ सकते हैं? फॉर मी strategically, and same I think goes for movements like the PTM या बलोच movement या सिंधीज हैं या GB से है, सराइकी से की movement है, क्या वो अकेले सियासत के साथ, इस establishment के साथ, उसके जो दरिंदे हैं, उसकी जो पूरी मिलिशियाज हैं और एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनसे आप अकेले लड़ सकते हैं और क्या एक मुतबादिल खड़ा कर सकते हैं? So for me, it's a question of strategy, and for me, this strategically is the answer is absolutely no. And so that's, I think, what we have to really deal with. And again, goes back for me the same question कि आपकी दर्द एक हकीकत है, आपकी grievances एक हकीकत हैं, आपका trauma एक हकीकत है, हम सब का trauma एक हकीकत है in varying levels, whether it's as a collective group or whether it's individually. हम जिस तरह बड़े हुए हैं, हमारे साथ बचपन में जो हुआ, हम जिस तरह जिस सर्कमस्टांसेस में हम पैदा हुए और डेवलप हुए, वो एक सब के लिए हकीकत है. बट जस्ट एज अ थेरेपिस्ट विल टेल यू, कि आप जो आपके साथ जो हुआ बचपन में, आपके जो
वालिद ने या वालिदा ने या घर ने या स्कूल में आपको जो बुली किया और उसके नतीजे में आपके अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, that's not you. That's not all there is to you. That is a particular wound that you have that has created certain things and it's like altered your life in many ways and altered your brain in many ways and आपको बहुत ज़्यादा affect किया है. लेकिन that's not all there is to you. And there is an essence to you that goes beyond that. And there's then there's a commonality, a universality to all of us, a fundamental connection between all of us that goes beyond race or religion or gender or nationality or any other sort of category that you could place us in. And that is essentially what we have to draw on. And I think this is what we have to focus on. And for me, this is something that's very hard for leftists to do. And हमारे हमें सिखाया ही बचपन से क्या मतलब हमारी तंजीमों में, हमारी तहरीकों में, हमारी ग्रोहों में, हमारे दोस्तों में, we operate on this sort of like oppressor-oppressed dynamic and this grievance-based dynamic. और हम अपनी तंजीमों में भी ये करते हैं. Honestly, and this is part of why हम बात करते हैं left sectarian क्यों है इतना, left कमजोर क्यों है, why can't we work together? Well, this partly because the operative logic of our sort of emancipatory revolutionary ideology is one in which we constantly have to divide people into this oppressor-oppressed dynamic. और आप अपनी पार्टी के अंदर भी आपको कोई हॉबी हॉर्स मिल जाते हैं, ये बंदा, ये बंदी, ये ग्रो, ये ग्रुप, ये यहाँ इस पार्टी के अंदर जो है या इस तंजीम के अंदर ऑप्रेसर है, मैं अप्रेस्ड हूँ, मैं मार्जिनलाइज्ड हूँ, मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसको निकालो, उसको निकालो, उसको मतलब दिस इज समथिंग, या हम अलग हो जाएंगे, या हम अपना अलग कुछ बना लेते हैं, या हम बस अपनी छोटी सी ग्रुप बना लेंगे और वही इनकलाब लेकर आएगा. दिस इज अ प्रॉब्लम. And it's a problem that directly relates to the logic of our thinking, that the operative logics जो कि पोस्ट मॉडर्न एरा में हम बहुत ज़्यादा इम्बाइब कर रही हैं. 20वीं सदी में ये मसले उस तरह से नहीं थे, क्योंकि वो एक नजरियाती यूनिफॉर्मिटी काफ़ी हद तक थी और एक हायरार्की की भी एक अंडरस्टैंडिंग थी, लीडरशिप की एक एक्सेप्टेंस थी. अब तो आप लेफ्ट में एक बड़ा शदीद एक मसला है कि आप लीडरशिप को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. कोई भी अगर कोई लेफ्ट में बन जाता है someone who commands a certain kind of authority, there'll be like 50 leftists who just start tearing him down saying ये क्या है, ये तो इसको किसने मान लिया लीडर, ऐसे तो नहीं हो सकता, चुप वापस तू नीचे आ. है नहीं, हम तो हॉरिजॉन्टलिज्म पे यकीन रखते हैं और सबको बराबर होना चाहिए, और कोई अगर आगे बढ़ जाए तो भाई आप उसको वापस मास में खींच लो. Now this is, for me as an organizer, this is a deeply problematic way of doing things because you need leadership. I know as an organizer कि leadership के बगैर कोई सीन नहीं है, ठीक है. उसके बगैर आप कोई तहरीक नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो फेमिनिस्ट तहरीक हो, नेशनलिस्ट तहरीक हो, सोशलिस्ट तहरीक हो, ना कोई जिस मर्जी तरह की चीज हो, लीडरशिप के बगैर नहीं हो सकती. Someone needs to, even if it's not a very hierarchical thing या unaccountable thing, there should be accountability. All of that is absolutely true. Deliberation, consensus building, all of that. But अगर आप सारा वक्त हॉरिजॉन्टलिज्म में रहेंगे ना, तो आपके साथ वही होगा जो ऑक्यूपाई मूवमेंट के साथ हुआ, ठीक है. Eventually dissipated because literally uska ethos hi us movement ka, if there's one enduring thing you can take from it, it is that horizontalism, fundamental equality, the people's microphone, koi leader nahi hai, leaderlessness. That's fine for like a flowering of a certain kind of spontaneous energy. Arab Spring में भी जिस तरह हुआ, लेकिन फिर आप देखें उसके बाद क्या होता है. All you're doing by not having an organization structure, not having leadership, आप उसको जाने दे रहे हो. So for me, all this goes back to this kind of mode of thinking जो कि हम पिछले कई सालों से हम आ गए हैं, this grievance based dynamic of logic of oppressor and oppressed, of fighting, constantly having to fight. And for me the alternative to that is that we have to go back to the idea of creation and creativity, that our identity for me is about on the left कि आपकी शनाख्त को अपने दर्द से, अपने ट्रॉमा से अलग करके, उस ट्रॉमा को हील करके, and we have to figure out how that healing takes place, but we need to do that healing and then displace our identity from there to what we actually do, not what we are, not what happened to us, लेकिन what we actually do, what we create, what we produce, you know, what, and collectively, and this is true for me and relates to what I was saying earlier about the economy as well. We have to be thinking about production. Okay, we have to think about कि हम क्या पैदावार कर रहे हैं, जो और किस तरह की पायदार, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पैदावार और लेबर इंटेंसिव, जिसमें सबको मुआवजा मिले और फेयर वेजेस भी मिले. And we also have to, this is also true in terms of politics,
We have to create these new solidarities, new identities, new ways of thinking, new transnational solidarities. It cannot just be हम तो ये ग्रोह हैं, हमारी ये शनाख्त है, हम तो उसी में लड़ेंगे, अब बाकी बाहर में. So yeah, I mean, I'll stop there. I think I've been So going on too long. brilliant articulation. मुझे 50 thoughts आ रहे थे, but मुझे लग रहा है मेरी personal therapy हो रही है. What a brilliant speech, Mr. Ammar. I think that also speaks to the success of movements like BLM. अभी उनको थोड़ा बहुत criticism आ रहा है कि ये क्या मतलब आप कह रहे हैं हम Marxist organization है, and the leaders were quite clear about that. या औरत मार्च जब अपने मैनिफेस्टो में बलूच की बात करती है, इंटरसेक्शनैलिटी की बात करती है, तो शायद कुछ औरतों को भी उससे शिकायत होती है, बट स्ट्रेंथ ही है ना कि हम सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एक देखते हैं. अगर They वो are coming सोशलिस्ट together. बातें Yeah. करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. एंड इवन जो आपने आइडेंटिटी की बात की, ये फिक्शन में बहुत ज्यादा हो रहा है. या सर्वाइवर, उसमें काफी कहा जाता है कि योर अब्यूज इज नॉट हु यू आर. एंड इवन ब्लैक हिस्ट्री में अगर ब्लैक पैंथर का भी जिक्र करें, ब्लैक पैंथर एक ब्रिलियंट इमेंसिपेटरी कॉमिक बुक इसलिए है कि वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करती है, एक ऐसी ब्लैक सिटी इमेजिन करती है दैट्स नेवर बीन टच्ड बाय कॉलोनियलिज्म. तो उनको पता ही नहीं है हम कमतर हैं, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि तुम कमतर हो, तो वो कमतरी उनके जहन में आई ही नहीं है. वो अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते ही इसलिए कि वो कॉलोनाइज उनका दिमाग हुआ ही नहीं है. और क्योंकि उनका दिमाग कॉलोनाइज नहीं हुआ है, द ब्लैक पैंथर कम्युनिटी हैज बीन एबल टू डू व्हाट दे हैव बीन एबल टू डू. और उसी तरह छोटी छोटी चीजें होती है ना कि इवन थिंग्स लाइक वैक्सीन्स. अभी गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा किस गोरे डॉक्टर ने वैक्सीन इजाद की. लेकिन अभी मैं रिसेंटली ये पढ़ रहा था कि एक स्लेव था, उसने देखा कि बड़ी बीमारी हो रही है, तो उसने अपने स्लेव ओनर को बोला कि भाई हम अफ्रीका में एक बीमार आदमी का थोड़ा सा पस लेके जो दूसरा नॉन बीमार है उसको दे देते थे ताकि वो वैक्सीनेट हो जाए. एसेंशियली दैट्स हाउ वैक्सीन्स वर्क. बट उस काले आदमी का आपको कहीं जिक्र नहीं नजर आएगा क्योंकि वो तो एक स्लेव था. सो दिस आइडिया दैट वी टॉट कि नहीं, कालों ने तो कभी कुछ भी नहीं किया, हर चीज गोरे की थी, हर चीज मेंशन उनकी थी. और पाकिस्तान का भी यही मसला है कि हमारा कॉलोनाइज माइंड इतना ज्यादा है कि हमें तो लगता है ब्रिटिशर से पहले कुछ भी नहीं था. वो रेलवेज बना रहे थे इसलिए कि वो हमारी चीजें चुरा कर वापस लेके जाएं, और हम आज तक तालियां बजाते हैं कि वाह यार, इन लोगों ने हमें नेमत दी, इन लोगों ने हमें रेलवेज दी. उनसे पहले तो हम नंगे भूखे घूम रहे थे. एंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट हम अपनी इंडियन आइडेंटिटी से भी डिटैच्ड हैं. सो यस, हाउएवर मच वी मॉक देम कि राइट ब्रदर्स तो नहीं, एक्चुअली हमने प्लेन बनाया था. बट इट हेल्प्स क्रिएटिंग दैट आइडेंटिटी कि यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि हमने भी कुछ किया है. क्योंकि हम अपने आप को अपनी ही हिस्ट्री से डिटैच कर देते हैं. ऑब्वियसली बलोच भी नहीं कोई सेलिब्रेट कर सकते, हम सिंधी भी कोई नहीं सेलिब्रेट कर सकते. इट हैज टू बी अ पाकिस्तानी थिंग जो स्टेट सेलिब्रेट करे. वो 47 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं. आई नो यू हैव टू रन, बड़ा सवाल तो रह गया, मे बी वी कैन डिस्कस दैट सम अदर टाइम. बट एक दो छोटे से सवाल हैं. अमार अली जान, बुशरा गौहर लॉन्चिंग ए न्यू पार्टी, खुशाइन है या डू यू फील लाइक कि अवामी वर्कर्स पार्टी तो एज अ कलेक्टिव इट्स बेटर अगर सब लेफ्ट कलेक्टेड रहे, या मल्टीपल पार्टीज इज गुड? Yeah, I think I mean I wouldn't want to say अभी too much about that क्योंकि अभी उसकी initial stages हैं और obviously बहुत सारे processes पीछे से चल रहे होते हैं इसके. But I generally think कि खुशाइंद है. अमार obviously is an old friend and comrade और हम एक साथ पार्टी में भी रहे हैं काफ़ी अर्से. और वो मुख्तलिफ वजूहात थी कि उसने छोड़ा, mostly like local issues जो उसके लाहौर में थे, which I wouldn't want to get into. But I do think कि I think it's a good thing purely for the sense कि I think कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो nationalists हैं और जो left है उसका जो है साथ मिलना इस मुल्क के अंदर और उनको एक common project articulate करना उस वो बहुत अहम है. And I think we're moving towards that in general in this country. As far as we are concerned, I think इसके ऊपर there's a general openness to this within AWB. हमारी अगले हफ्ते में फेडरल कमेटी की मीटिंग भी है. आई एम श्योर उसके अंदर ये ज़ेर बहस आएगा भी. और ज़ाहिर है हमारे से तो प्रोसेस में बातचीत तो चलती रही है. एंड ख्वाहिश तो हम सब की यही है कि हम इवेंचुअली जो हैं एक ही फॉर्मेशन में हो. अब वो किस तरह होता है, चाहे कोई अलायंस की शक्ल में होता है, कुछ और शायद बात किसी पॉइंट पे मर्जर का की बात हो, वो भी पॉसिबल है. अब आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट हमारा पार्टी का तो एक ये भी है कि पिछले हम एक साल से हमारा एक मर्जर प्रोसेस हमारा चल रहा था विद नेशनल पार्टी एंड मजदूर किसान पार्टी. जो बिजंजो साहब की जो नेशनल पार्टी थी और जो एमकेपी है, व्हिच इज बेसिकली विद somewhat more nationalist social democratic group and more sort of MKP जो कि थोड़ी Marxist Leninist है. AWP somewhere in the middle.
तो वो भी प्रोसेस है, अभी वो चल रहा है, उसके ऊपर उसका भी एक आने वाले दिनों में होनी है। तो आई थिंक इवेंचुअली मेरी तो कोशिश यही होगी कि इन स्टैंड्स को और इन मुख्तलिफ जो कमिंग टुगेदर है दीज डिफरेंट लेफ्ट और नेशनलिस्ट की फोर्सेस और साथ में सोशल मूवमेंट्स भी, उसको किया जाए, उनको साथ जोड़ा जाए। और मेरी वहाँ से यही बात हुई है पिछले दिनों में कि आने वाले उस महीनों में हम इसके एक डायलॉग का प्रोसेस चले। और आई थिंक पर्सनली कि इस चीज़ को थोड़ा करना ही है तो एक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक एक कंसोलिडेटेड अंदाज में करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अभी तो इस जहाँ तक इस पार्टी का अंदाज है, इस मोस्टली जो कुछ पीटीएम के कुछ लोग हैं, मोहसिन दावर, फरासिया, अबू बुशरा, और कुछ ऑब्वियसली पुराने एनपी में जो कुछ लोग थे, एंड देन इट्स अमार एंड सम एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट। तो आई डू थिंक इसको और वसी करके और तरह के नेशनलिस्ट हो गए, आई एग्री, इवन आई थिंक लिबरल्स हो गए, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, फार्मर्स मूवमेंट्स हैं, लैंड की जो मूवमेंट्स अभी जो चल रही हैं, उन सब को आई थिंक एक डायलॉग प्रोसेस की तरह जो जोड़ना चाहिए। थिंग्स लाइक द कराची इंडिजिनस राइट्स अलायंस, कराची बचाओ तहरीक जैसी जो ग्रुप्स हैं, बलोचिस्तान में इस तरह के बहुत सारे हैं, जीबी में ऑब्वियसली हैं, बाबा जान जैसे जो हमारी पार्टी के भी, उन सब ग्रुप्स में आई थिंक एक डायलॉग होना चाहिए। एंड आई थिंक वी शुड इवेंचुअली इमर्ज फ्रॉम दिस एज सम काइंड ऑफ singular formation. These things obviously cannot happen overnight. Local considerations होती हैं, regional issues होती हैं. But I think generally, yes, I welcome these developments, and I'm hopeful that in the coming weeks and months we'll be able to figure out ways to work together. दो जिस लोगों तरह हम ने पहले भी मैसेज करते आ रहे करके पूछा है कैसे ज्वाइन करें डब्ल्यूपी। हैं। And कब इस ब्रॉडकास्ट के दौरान? नो नो नो, व्हेन आई पुट अप योर थिंग, टू पीपल मैसेज कि हमने ज्वाइन करनी है, हाँ, हम कैसे ज्वाइन करें। मैं आपको मेंबरशिप फॉर्म भेज देता हूँ, तो आप मैं लिंक सेंड ऑनलाइन कर हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। इट्स आई थिंक मुझे एग्जैक्ट यूआरएल नहीं याद, आई थिंक awamiworkersparty.org/membership-form। तो उस तरह कर सकते हैं या, बट आई थिंक या द जो होप जिसकी शुरू में भी हम बात कर रहे थे, आई थिंक वो इन चीज़ों में मुझे नज़र आती है कि शायद आजकल के नौजवानों को इतना नहीं लगता होगा। लोग, मैं तो थक गया हूँ सुन सुन के लेफ्ट पाकिस्तान में कुछ है नहीं और लेफ्ट की कोई हैसियत नहीं है, कुछ करती नहीं है। भाई आप 10 साल पहले देखते क्या था, और आप आज देखते तो आप, मैं आपको पूछता आपसे कि क्या कोई हैसियत है नहीं है। मतलब अभी आई थिंक पीपल, सो मेनी पीपल जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ हमारे पास प्रोमिनेंट लेफ्ट के फिगर्स हैं और एक लेफ्टिस्ट सियासी जमातें हैं और ये ट्रेड यूनियंस हैं, जो लोग हैं जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट पार्लियामेंटेरियंस लाइक अली वजीर जो अभी जेल में है नॉनदलेस, लेकिन है ना वो पार्लियामेंटेरियन। और ये इस तरह, और ये बड़ी बड़ी सोशल मूवमेंट्स हैं, और एक फेमिनिस्ट तहरीक है इस मुल्क में जो कि दैट हैज दीस मास गैदरिंग्स एवरी फ्यू मंथ्स। This is not normal for this country, right? This is the Islamic Republic of Pakistan, okay? और जब यहाँ लोग ताने लगाते हैं लेफ्ट को, लेफ्ट तो सीरियस नहीं है जी, इस मुल्क में वो क्यों नहीं करते, पावर में नहीं आते। दिस इज लाइक सेइंग कि यार सऊदी अरेबियन लेफ्ट बड़ा हरामजादा है, उनको कुछ पता ही नहीं है, ये क्या तरीका है सऊदी अरेबिया में तो इनकलाब आ जाना चाहिए था। मतलब आपने देखा है मौरूजी हालात उस मुल्क के क्या है, हेजेमोनिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, कितनी रेज ऑफ फोर्सेस हैं उसके इर्द गिर्द। आप इस, and we are only like a couple of steps removed and in many ways worse in terms of abductions and stuff, कि इस मुल्क में अगर एक बनती है कोई भी सियासी कुव्वत, उसके साथ क्या होता है, अब्डक्शंस हो जाएं। आप बाबा जान ने 10 साल जेल में गुजार दी, आधी जवानी गुजार दी, अली वजीर 5 महीने से जेल में है, फेमिनिस्ट हमारी एग्जाइल में बैठी हैं, स्टूडेंट्स कोई आती हैं उन पर सेडिशन के इल्जाम लगा देते हैं। हर दूसरे यहाँ हमारी पार्टी के कारकुन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है या उसको अब्डक्ट किया गया है, उसको जेल में डाला गया है। भाई इस तरह नहीं आते लोग, मुश्किल होता है आम लोगों का फिर सियासत में आना जब आपने इतना क्रिमिनलाइज किया हो, जब आपने उसको इतना महदूद रखा हो। हमारी अपनी गलतियां यकीनन हैं, मैं उनकी तफसील में पिछले 1 घंटे में गया हूँ कि वो क्या क्या हैं, लेकिन बहरहाल जो मौरूजी हालात हैं इस मुल्क के, वो अब इतने हैं गंभीरता कि उसमें मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद नजर आता है आपको पिछले सालों में कि हालात उस तरफ जा रही हैं, आई थिंक कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है, एंड आई थिंक इट्स गुड। एंड आई थिंक सम थिंग्स वी नेवर गॉट टू टॉक अबाउट एंड आई जस्ट वांट टू ब्रीफली टच ऑन देम कि आई थिंक जिन एरियाज के अंदर आने वाले सालों में पोटेंशियल है, एंड आई थिंक इट रिलेट्स टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिसी पैराडाइम जो लेफ्ट की बात कर सकती है और जो हुकूमत जिस तरफ नहीं ले जा रही। तो फॉर इंस्टेंस ये जो और पूरा कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी है और ज़मीन को मज़ीद को मॉडिफाई करके
उसके गिर्द एक पूरा ग्रोथ मॉडल बनाना, which was again attempted in Musharraf's time, and it's now a new model of that is being attempted now. We really need to have a serious national conversation about this, and I think इसके गिर्द अब मज़ामत भी बढ़ना शुरू हो रही है, और this needs to be one of our key issues going forward. And for me, it's a question of land reform. We need to have land reform needs to be back on the agenda, and it's not just पहले तो ज़राई इस्लाहात कहते थे ना इसको, agricultural land reform. So now it's not just that. We need urban land reform at a mass level in this country, and it's not just a question for me of distribution. You know कि ज़मीन की तकसीम बहुत ज़्यादा नामवारी है उसमें, और जो obviously है पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म भी बहुत महदूद हद तक हुआ था, जिसकी वजह से आज हमारी अर्बन एरियाज भी इतने अनइक्वल हैं. और देन यू सी बैरियर टाउन जैसे जो न्यू अर्बन फ्यूडल्स जो आ गए हैं, तो और डीएचए जैसे ऑब्वियसली, और ये पूरा हमारे मुल्क की मईशत की कॉर्नरस्टोन बन गया ना. इट्स नॉट लाइक एनी अदर कंट्री where this also happens in addition to other things like whatever, maybe Bangladesh or Vietnam or other places. This is the आपके मुल्क का हर सरमायादार की रियल एस्टेट होल्डिंग्स है, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट there is a real estate sector. It's the most lucrative asset base in the country. The thing on which you get the highest returns in the shortest period of time. The thing जिससे आप बेतहाशा रेंट सीकिंग कर सकते हैं. So it's for me, it's not just a redistributive issue. It is absolutely a redistributive issue कि आप जो dispossession कह रहे हैं, वो उसका एक, it's the top of the pyramid. It's the immediate expression of the most grisly expression of जो ये पूरा policy paradigm है. लेकिन it's also a production issue. It's also a productivity issue. And I think and I talk about these things also in that way because you need to get the mainstream policymakers to understand the deficit hogs and the people like Nadeemul Haq जो कि बस कहते हैं कि बस यही इंजन है ग्रोथ का, आप deregulate कर दें, उनका पूरा policy paradigm है कि deregulate कर दें real estate को and watch what happens. And it's just, I find it to be frankly delusional. मेरी तो स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए कि 60 साल के बाद कोई भी एकेडमिक या एक्सपर्ट हो, उनकी राय सुनी ना जाए. So 3 लाख को मैंने म्यूट किया हुआ है ट्विटर पे at this point. Fair enough. हाँ, I do think we need a generational shift as well. वो एक बहुत अहम इसका हिस्सा है. लेकिन बुनियादी तौर पे ये हम आपकी मईशत को, जो आपको लग रहा है ना कि आपको बड़ी ग्रोथ दे रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ आपको हर कुछ अरसे बाद देता है. लेकिन अल्टीमेटली it's dragging away resources from the places you actually need productive, which can be good for employment, which can be good for jobs, for inequality, for technological growth, for innovation, for digitalization, for sustainable urban expansion. You know, वो सारी चीजों से ये चीजें खींच रहे हैं पैसे, एंड आपकी सिटीज की हेल्थ को ये तबाह कर रहे हैं. वो लोग कुछ गोइंग ऑन विद दालपिंडी रिंग रोड, उसका बात नहीं होती. एसेंशियली दिस मैसिव Ponzi scheme with, and it's always the same people. It's these land development authorities, जो होती हैं RDA, LDA, और जो साथ इनके जो इंतजामिया, DC कमिश्नर नाम, real estate large developers, barrier town, DHA, and then इनके साथ ये जो सियासतदान मिल जाते हैं जो उस वक्त पावर में होते हैं. And these people control land, they divide it up amongst each other. ये लोगों को displace भी करते हैं, local economies तबाह करते हैं, agricultural economies तबाह करते हैं, और जो हाउसिंग की प्राइसेस को मैसिवली इन्फ्लेट कर देते हैं कि आपकी 50% आबादी को कच्ची आबादियों में रहना पड़ता है. इस तरह की गर्मी में बिजली तक नहीं उनके पास होती, पानी नहीं उनके पास होता. तो इट्स जस्ट कम्प्लीटली लाइक अंडरमाइनिंग जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ हमारा हो सकता है. एनवायरमेंटली इसके ऊपर भी हमारी बात की हुई, आई थिंक किसी ने जिक्र भी किया था. लाइक इफ देयर इज एन एनिमी ऑफ द क्लाइमेट इन दिस कंट्री, इट इज द रियल एस्टेट माफिया. एंड क्योंकि जितना भी आप ज़्यादा और ये फैलाते जाएंगे, स्प्रॉल करते जाएंगे शहरों को, उतनी ज़्यादा और एनर्जी डिमांड्स बढ़ेंगी. वही चीज़ जो आप एक पावर प्लांट आपको किसी एक जगह के लिए लगाना पड़ता है, आपको आप और लगाने पड़ेंगे, वाटर लाइंस और लगानी पड़ेंगी, पावर लाइंस और लगानी पड़ेंगी on this complete continued horizontal expansion. Deforestation और करनी पड़ेगी. We've seen what happened to orchards in मुल्तान, जो मैंगो ऑर्चर्ड्स के साथ जो डेसिमेशन हुई, ज़ियाउल का बदला पूरा किया उन्होंने उन आमों के साथ. So yeah, so it's not just a question of displacement is the tip of the pyramid, tip of the iceberg. There's this entire way in which is undermining the economy. So we need to so ये जो movements की खड़ी हो रही हैं, चाहे वो कराची बैरियर टाउन में हो, चाहे वो गुजर नाला की मुतासरीन की हो, and I think it's amazing कि कराची में जो हमारे comrades हैं वो इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि the eviction in गुजर नाला
हो रही हैं वो इंटीमेटली कनेक्टेड टू दी एविक्शन एंड बैरियर टाउन, चाहे वो लगे कि वो कुछ किसान हैं, दूसरे अर्बन मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उन रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही रिश्ते फिर हमें बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे पिंडी में रिंग रोड की वजह से, या लाहौर में रावी रूडा की वजह से, या पेशावर में मेट्रो या और मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से, या सराइकी वसेब में जो मेगा वाटर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट और रिवर दरियाओं का रुख बदला जा रहा है, या जो इंडस डेल्टा में सिंध में जो कॉम्परेस जो बड़े अरसे से रो रहे हैं कि इंडस डेल्टा को इन मेगा डैम प्रोजेक्ट्स ने तबाह कर दिया है। हमारी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सस्टेनेंस एंड कल्चर, हमारा सारा जो हम बुनियाद थी हमारी समाज की, उसको आपने अपर स्ट्रीम डैम्स और राजेस और कैनाल्स के जरिए आपने हमसे छीन लिया है। और किसके लिए? सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इंटरकनेक्टेड, एंड ये तभी होंगे रिजॉल्व जब हम एक इन सब मूवमेंट्स को, कौमों को, डिफरेंट ग्रोहों को जोड़ के किसी एक नए मुतबादिल पैराडाइम विच इज फर्मली प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट, लेकिन बट इट आल्सो हैज स्पेस फॉर दीज डिफरेंट आइडेंटिटीज, अलाउज देयर एक्सप्रेशन, उनको जगह दे और उसकी गिर्द हम एक नई सियासी कोच बना पाए. एंड आई थिंक होपफुली माय सेंस इज नॉट टू साउंड टू होपफुल, and a lot of things could go wrong, and they always do. And but I think कि उसकी कुछ हमें बुनियादें हम नजर आना शुरू. Brilliant, brilliant. Good luck. More power to you and all the work that you do. I know you have to run for a meeting or a class as well. But जो एक बहुत बड़ा सवाल था उसकी मुझे सिर्फ हेडिंग्स दे सकते हैं आप कि हमने डिस्कस तो कर लिया बजट में कुछ चीजें बेहतर कैसे हों, लेकिन if we do throw it all out, what does a budget, in your opinion, or what are things we should focus on that is actually pro-poor, that actually leads to sustainable growth? उसकी कोई 3-4 हेडिंग्स दे सकते हैं कि ये चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए? Yeah, honestly, the things we need from what I think जो हमें चीजें sustainable growth के लिए चाहिए, वो they are not just budgetary items, okay? These are structural needs. So for me, if you talk about the first thing you do, I would say land reform, ठीक है? उसके बाद आप बाकी सारी चीजों को देखें, क्योंकि उसके बगैर कोई नहीं मामला हल होना। ना आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी कहीं सस्टेनेबल लेवल पे, ना आपकी जो शहरों के अंदर ये जो पूरा हमने अभी बात की है वो ठीक होगी। तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। लैंड रिफॉर्म के अंदर बहुत सारे इसके पहलू होते हैं कि आप लैंड की यूटिलाइजेशन आप किस तरह अर्बन एरियाज में कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली पब्लिक हाउसिंग के हवाले से आप क्या क्या कर रहे हैं, स्मॉल इन रूरल एरियाज स्मॉल फैमिली बेस्ड फार्म्स को आप फरोग दें, उनको एक मैसिव एक्सटेंशन सिस्टम बनाया जाए। तो और उसके उसके अलावा रेगुलेशंस, लैंड रेगुलेशंस, कि आप किस चीज़ के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, किस आप प्लॉट्स को खाली स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए कितना अर्सा रख सकते हैं बिफोर द स्टेट पेनलाइज यू. एंड आई थिंक वेरी वेरी क्रूशली थिंग्स लाइक व्हाट आई थिंक वी नीड इज लाइक अ लैंड वैल्यू टैक्स. आई थिंक वो पाकिस्तान में कभी नहीं लागू किया गया. I am a very strong believer in this. I think there's a lot of evidence for it. I've written papers on this. अगर पढ़ना चाहें मैंने इस पे एविडेंस भी कुछ प्रेजेंट की हुई है, एंड आई थिंक मेरा आ भी रहा है नेक्स्ट मंथ. मैंने और आसिम ने उस पे लिखा है You should on the start a militarized podcast, development. Ammar. यार हाँ, लेकिन क्या यार, वक्त नहीं मिलता. या तो आप तंजीम साजी करें और फिर आप, मेरे बच्चा भी है, फैमिली भी है, काम नौकरी भी है, पार्टी भी चलानी है, सब कुछ. फिर पॉडकास्ट मैंने दरमियान में आनी शुरू की थी, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन, बट आई विल ट्राई, आई डू ट्राई एंड communicate as much as I can. But yeah, so what was I saying? Yeah, a land value tax. Okay, we really need to start taxing unutilized land. ये जो हमारे blanket property taxes का जो पूरा है ना, क्या property taxes या तो बढ़ाएं या कम करें. That's a very wrong way to look at it. I think अगर लोग घरों में रह रहे हैं अपने ज़मीन को घर के लिए या किसी productive माशी ज़रूरत के लिए non rent seeking productive use के लिए इस्तेमाल करें, we shouldn't be taxing that too much, or not at all, in fact. And what you need to be taxing is unutilized land, whether it's large scale land holdings, ज़रात के, या आपके जो शहरी ज़मीन है जो कि आप 10-10 साल प्लॉट लेके बैठे रहते हैं. That can, I think, raise a lot of our issues, address a lot of our issues. तो ये कुछ I think structural issues हैं जो कि I don't know, budgets have to do with a part of it, but that's not the be all and end all. Second, I think जो मुझे समझ आई है for what other countries have done in the past, other Asian countries, जिसके जरिए उनकी एक sustainable growth path बन पाया है, वो है एक state led industrialization process, एक बहुत प्लान तरीके से जो हमने नहीं किया. We haven't really had an industrial strategy for like since Bhutto's time or whatever. And वो जो है, it's not just about like just randomly giving out subsidies to whoever asks for it, or giving out tax exemptions to whoever asks for it, जो हुकूमत करती है. It's really about having like this एक तो very concerted strategy of funneling जो surpluses जो produce होते हैं खासकर agriculture में,
उसको इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाना, डिसिप्लिनिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, और उनको आप करना, एंड कंडीशनिंग ऑल ऑफ योर सपोर्ट टू दैट, और अगर ना करें तो यू टेक अवे दैट सपोर्ट, and then ensuring that the private sector, I think that Pakistani government has never done or never really tried to do in any meaningful way, और I think अभी जो स्टेट बैंक ऑटोनॉमी की बात हो रही है उससे ये और कम होने के चांसेस हैं कि you need to get the banks to lend to productive sectors of the economy, and जब तक वो नहीं होगा तो कोई ग्रोथ नहीं होनी, और वो भी एक उसकी बुनियादी वजह अगेन इज लिंक टू दिस होल प्लान है, एक तो बैंक रेगुलेटेड नहीं है इस मुल्क में, इनका जो स्प्रेड है बिटवीन लेंडिंग एंड सेविंग रेट्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा है compared to other developing countries, and importantly, I don't know if maybe we should light be and this might get disconnected, but savings Pakistan में बहुत low है ना, so people don't save because mostly they just save in these inland. You get middle class की savings are all caught up in this dead capital which is in real estate, which does not really bring them much in terms of returns. Long term payoffs उसके कुछ होते हैं asset based, but productive use तो नहीं है, right? So it's not going into the financial sector, which can then also lend to other sectors of the economy. So ये again एक problem है, but we need to figure out fixes around this. It has to do with financial inclusion और भी बहुत सारी चीजें हैं, but ultimately does have to do with a very tightly regulated banking sector. बैंकों के profits को कम करना पड़ेगा, इस तरह नहीं चल सकते कि आप बैंक्स के hundreds of millions profits आ रहे हैं, investment कोई हो नहीं रही मीशत में, तो क्या फायदा? Speculative finance capital on its own is useless, and we need to realize this. And so yeah, so this entire stated industrialization process, and obviously this cannot be a 20th century process again, and now it has to be like a ecologically sustainable one. And so thinking in terms of paradigms like जो अभी Green New Deal जैसी जो बात हो रही है, so we need a very strong public sector led investment, or, and this is historically also been true कि capital investment जो होती है ना, जो large scale infrastructure या basic technology for many industries जिसके जरिए वो develop कर सकें और innovate further कर सकें, that is almost always done by the state. Okay, इंटरनेट से भी और इस तरह की जो मुख्तलिफ इजाज़त थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इसकी बुनियाद पे so much of the technological revolutions have taken of recent decades have taken place, it was all state-led project. Similarly, energy infrastructure और बहुत सारे जो बनते हैं इस तरह की चीजें, these are state-led, and so the state needs to figure out how it's going to finance those and figure out a way to do it. And it has to be about creating like new kinds of jobs, and that and some figuring out some way of like growth that regenerates rather than expropriates, because the capitalist model has been like this appropriative growth model in which you exploit nature as a resource, and I think we need to move towards a model in which we regenerate nature somehow, that replenishes nature while also providing new forms of gainful employment to people, while also having like a very large uh, um, social protection program, maybe some kind of basic income program that ensures basic needs are met. So these are like just some of the broad areas I think we need to move towards, which can incrementally take us towards other kinds of more radical possibilities. And in the end, I think we need a whole other podcast for that. But I know this is within your interests as well, because especially if you're talking about this ecological sustainability question, and also relating back to जो बात हो रही थी about like शनाख्त के बारे में और creating and like trauma heal करने के बारे में अपने, and not just having that as identity. And I think we really need to. I think there's a lot of potential in what is happening right out there in the psychedelic renaissance. And I think that is something we need to pay very close attention to, including on the left as well. And I say this, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, and I absolutely do not want to come across as some kind of a pro-drugs person कि भाई हर तरह के drugs are okay. I don't think so. I think some drugs are awful. कैटेगराइजेशन Alcohol, में for मसला है, instance. जब हम ड्रग्स कहते हैं और हम सबको ही डाल Yeah. देते हैं, नहीं बिल्कुल बच्चों मेथ ना करो, हेरोइन ना करो, कोक ना करो, ये ड्रग Absolutely, yeah. Yeah, exactly. And I think this catch-all idea of drugs is a terrible idea. It doesn't capture what certain things do versus what other things do. But I think there are certain things, and I think and I'm saying this because I've read the studies, I've been investigating this for the past couple of years, and there seems to be enormous therapeutic potential for both on an individual level and I think on a collective level.
in some of these substances, including like things like obviously LSD and like psilocybin, MDMA. ayahuasca, and about how they are helping and incredibly transformative sort of healing rates, like success rates in terms of healing long-standing mental health issues. Even I've seen heard stories, and this needs to be investigated further. But of things like remission in things like in cancerous growths and things like that from people who use these things to heal in settings, in therapeutic settings, of course. And I don't think randomly doing this recreationally gives you हम्म, that much वो benefit. I कर think भी it नहीं has to be. सकते आप, because I mean these Yeah. are drugs that take a lot. You can't just be sitting Yeah. Yeah, popping and LSD and they're every not even day. addictive. Honestly, हाँ, it's not something you can do every day. yeah, you It's just can't. not physically possible for people to do it every day. But Yeah. nonetheless, I think a very अहम चीज इसलिए है क्योंकि I think there is like this renaissance in consciousness that is Yeah. currently underway. I think the psychedelic are part of it. I think we, as a human race, we're now opening ourselves to the possibilities of what these things can teach us, and I think it's growing in tandem with like these other developments that are happening. जो mindfulness revolution है, जो yoga से गिर्द जो और मुख्तलिफ spiritual practices के गिर्द जो जिनका बढ़ावा आ रहा है मुख्तलिफ दुनिया में, जो breathing exercise, breathing के गिर्द जो holotropic breathing से Wim Hof methods तक से लेके जो आ रहे हैं, and I think this new sort of, and I think the key commonality amongst all of these is the need, and I think this is like crucial, and it's crucial for both like people on the left, and I think it's crucial for us as Pakistanis in general, that the need to look inward, okay, as a person, as an individual, and as a collective, as a society, as a group, as a nation or collection of nations, okay, having to look inward and really seeing where you came from, what understanding yourself, आप कहाँ से आए हैं, how you're a product of your own traumas and your own sort of childhood experiences, and then the society around you that made you, and what and आप क्या बने, and how you can actually evolve further, and how you can, and I think that's what we all need to do. We need to do that as societies, we need to do that as individuals, and we need to use whatever tools are available in the right settings while giving them the appropriate amount of respect, and giving them the cherishing them in the appropriate way and with the appropriate amount of discipline. So I think we need to do that, and the purpose is to look inward, and by looking inward you discover the connection that you have with the other, with the collective, with everything else. And in the discovery of that connection, and in the internalization, I think, of that connection, and in the healing that occurs from that process, that I think जो हमारी आने वाली जो सदी की जो सियासत है, जो वो उसके जरिए आई थिंक बनेगी, और उसके जरिए जो तब्दीलियां आनी है, जो इनकलाब जो हम देखना चाहते हैं, जो बुनियादी समाजी तब्दीली हम देखना चाहते हैं, वो उस कनेक्शन बिल्डिंग के प्रोसेस के जरिए है। इंशाल्लाह, आई That's मीन इवन अगर हम तारीखी तौर से इस चीज़ को देखें तो बीएलएम से पहले सबसे ज़्यादा ग्लोबल कलेक्टिव रेजिस्टेंस कब आई थी? प्रॉब्ली एंटी वियतनाम आई थी। एंटी वियतनाम absolutely, वॉर मूवमेंट का साइकेडेलिक मूवमेंट हैंड इन ग्लव absolutely. है। देयर इज अ रीजन कि 60s जी। और 70s में ये तहरीकें बनी थी दुनिया भर में, और ये आइडियाज जो हम आज इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स एंड लाइक इक्वालिटी एंड लाइक फ्रीडम एंड बहुत सारी चीजें, दे इमर्ज फ्रॉम दैट इनकाउंटर जो कि इंसानों का हुआ, इस और ऐसी चीजें, इनकाउंटर ऑफ मोर मॉडर्न ह्यूमंस, आई वुड से, क्योंकि तारीखी तौर पे तो एंशिएंट बहुत सारे कल्चर्स में थ्रू आउट हिस्ट्री of human society, ये चीजें इस्तेमाल होती नहीं, and I think they played a very key role in the evolution of human consciousness. That's, at least it seems like, that's what the science is telling us now. And then now in the 60s and 70s, ये फिर से जब discover हुई in new scientific forms, और इनकी popular use इनका जब हुआ, तो उससे एक massive consciousness का revolution आया. And whether it's these ideas of rights and liberty and equality and all of that, or whether it's technological advancements, there's like studies on now how the discovery of the internet in Silicon Valley, or the World Wide Web, was in many ways a product of so many of these experiments that occurred with psychedelics there, Steve Jobs was and the microdosing. discovery of these. Yeah, absolutely. These people, and they're still doing it, I think. And no, अब कहीं हद तक महदूद है, क्योंकि दरमियान में then there was this massive backlash, and you see how the backlash goes in tandem. It's almost uncanny कि एक तरह से Reaganism और Thatcherism की backlash आती है against these movements and organized labor
and all of that, and like the whole idea of the welfare state and everything. And at the same time, you criminalize the expansion of consciousness. You criminalize the idea that you need to look to, like, that you can look to these other avenues for personal growth and for collective growth. And उन सारी चीजों को एक criminal और and sad, जी sorry. साथ साथ क्या करते हैं, साइकेडेलिक्स को क्रिमिनलाइज करते हैं और फिर जानबूझकर, आई नो गलत लफ्ज इस्तेमाल करना, लेकिन क्योंकि वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, गेटोज जिनको वो कहते हैं, ब्लैक गेटोज, उधर क्रैक कोकेन आपने जानबूझकर आम की कम्युनिटीज को तबाह करने के लिए। तो अगर आपका इरादा ये था कि जी ड्रग्स नहीं होने चाहिए, तो आप क्यों कोकेन ट्रेड में खुद इंडल्ज कर रहे हैं? साउथ अमेरिकन पॉलिटिकल चेंज ला रहे हैं कोकेन ट्रेड के लिए, क्रैक कोकेन आम कर रहे हैं कम्युनिटीज तबाह करने के लिए, साथ साथ साइकेडेलिक्स बैन Yes, कर रहे हैं। certain kinds of drugs have been encouraged. I think that's what this whole जी criminalization of the drug war was all about. Graham Hancock calls this a war on consciousness, because it's about कुछ तरह के drugs को बिल्कुल restrict कर देना और उनको criminalize, उनको stigmatize कर देना, जो कि that help people connect to each other and help expand consciousness, and कुछ substances जो कि आपको alienate करती हैं, जो कि आपको और ज़्यादा numb करती हैं, और and also like certain kinds अल्कोहल। of drugs like हाँ, अल्कोहल, कॉफी, कैफीन जैसी जो चीजें हैं, I mean we know now a lot enough of public health now that these things are also deeply harmful for your health. प्रोसेस लेकिन शुगर। उनकी yeah, absolutely, sugar is like more harmful in many respects than weed or so many of these other substances, but they help the capitalist system, they help the order in some way, they help, and alcohol especially, like, helps people be like, आप binge कर लेते हैं weekends पे, and then you सारा आप कुत्तों की तरह काम करते हैं 5 दिन, और and आपकी efficiency based drugs and all these antidepressants, and ये जो सारी एक उस तरह की neurotransmitter based जो, so what's the word for it, just like um, these like suppressants of any kind, जो symptoms को suppress कर देती हैं, लेकिन they're not really addressing the fundamental cause of why people have mental health disorders in the first place. बिग फार्मा। The big, yeah, exactly. So and so in सारी चीजों को, this is all, and it's not a coincidence. This has happened, and now thankfully through the efforts of many people who have been like diligently working on this, और वो अब इसको scientific realm के अंदर लेकर आ रही है। मसला तो बहुत ऐसे ये था कि आप study भी नहीं कर सकते थे इन चीजों को, क्योंकि criminalized थी। तो अब I finally आप, and I think going back, and again I'm always try to look internally and critically, I think left की और जो left can, that's probably not the appropriate word, but the psychedelic shamans of their generation in the 60s, they made mistakes. People like Timothy Leary, these whole ideas of this, there was a particular kind of self-indulgence to how they went about it, and an irreverence also, which was fine. I guess they didn't know any better then. It was the first time they were coming to contact with these kinds of substances as modern human beings. But this whole idea of tune on, tune in, drop out, and like, this flower power, and like this whole idea of also like just subtracting yourself from society, just being a hippie and living in a commune somewhere. I don't think that's the point. The point of doing this, the point of engaging with these things is not to like just separate yourself. And I think it's similarly just like how much of that is popular media that has popularized those ideas. लेकिन अगर हम डेनिस मैकेना की भी बात करें, टेरेंस के भाई की, हाँ उसने पेरू में जाकर किए और ट्रिप किया, लेकिन उसके बाद आके उसने फिर स्टडी भी किया, किताबें भी लिखी। अब जॉन हॉपकिंस की जो स्टडी हो रही है उसमें भी इन्वॉल्व है, सो बोथ थिंग्स आर देयर, राइट? बट ये नहीं कहूंगा सारा हाँ popular, पॉपुलर नैरेटिव absolutely. I think बनाया they जा रहा है ना definitely had a role. जी। People like Timothy Leary, उससे पहले I think it was H.G. Wells, या वो कौन था जिसने originally mescaline के ऊपर एक किताब लिखी थी, Doors of Perception, Aldous Huxley. Aldous Huxley, Timothy Leary, these people were like obviously the high priests of psychedelics, इनके popularize करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, और जो कुछ भी हुआ उस era में, I think they have to be credited for what happened. But then they made mistakes, is what I'm saying. And even what, like for instance, what you're talking about in a studies key and the Harvard project, the Harvard psilocybin project, they fudge data. I mean, that's हार्वर्ड the वाले में तो worst स्टेट thing you इन्वॉल्व can था do. ना, हार्वर्ड में हाँ, तो उसमें भी state involved था. स्टेट इन्वॉल्व था ना, स्टेट के But मसले थे। Timothy Leary के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम जो मैं as a researcher भी, for me that's the problem, because it undermines science and it undermines the legitimacy of the project, is when you fudge data and when you create results that you actually नहीं थे, and then वो फिर discover हो जाता है और पूरी credibility उस पूरे process की undermine हो जाती है. And this was one of the reasons that eventually the state used these kinds of mistakes to say अच्छा ये तो सारा एक sham है और इसको आपको बंद करने की जरूरत है, and there's no actual use for this.
तो उस तरह की गलतियां उन्होंने की. I don't think that justifies what happened, what the state did after that. But I think it's very important that we don't make the same mistakes now. I think it's very important. जो और ये हम सब ने भी जो कॉलेज एरा में किए होंगे इस तरह की चीजें, बिंजिंग वगैरह, वो नहीं करिए. let's put a handle on that. It's very important. Let's treat this with the solemnity मार and the बड़ी खान reverence. साहब टाइप बात किया आपने कि सब कुछ खुद करके सारी चीजें खुद करके बच्चों को अब आप मैंने बता कब रहे हो कि कहा? आप ना करें. Yeah, मैंने कब कहा? मैंने किया. आप putting words in my mouth. But nonetheless, no, but nonetheless, I think yeah, it's as much to myself and to other people. Yeah, I think we you should treat these, I think, with the Respect. grace and the reverence and sacredness that it deserves. Otherwise, हमें फायदा नहीं हो पाएगा. अगर आपने बस इनको इस्तेमाल करके ट्रिप करके हंसी मजाक करना है और बस दरख्तों को देख के हंसना है कि उसमें शक्लें नजर आ रही Which हैं, is also तो fine. that's not going to be it. But Which it's is still fine. fine. I'm not If saying, you want to do it look, to be happy, do it. yeah, look, do Yeah. whatever you want. Yeah. But my view is always don't distract yourself, okay? Don't distract yourself from the healing that we all need to do. Whether it's through breathing, whether it's through mindfulness, whether it's through these with psychedelics, whether it's through meditation, whatever it is that you want to do, actually, honestly, work on yourself, do it, and don't do it just individually. Do it collectively. Try to involve people. Don't also be जो पूरा mindfulness में जो atomized, self-oriented, self-help का चक्कर है. उससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता. I think being from the left हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन प्रैक्टिसेस को बजाय कि होलसेल रिजेक्ट कर दें, ये तो सरमायादारी है, हम इन प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करें इन आवर कलेक्टिव एफर्ट्स इन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स. काफी लोगों को लगता है मैं बहुत नॉन स्पिरिचुअल हूँ, मैं एक्चुअली काफी स्पिरिचुअल हूँ, बिकॉज आई थिंक दीज थिंग्स आल्सो दे हैव अ यूनिवर्सल पावर. सो अगर मैं भी 18-19 साल के बच्चे हैं, आई एम लाइक नहीं तुम हीलिंग के लिए करो, मे बी दे नॉट रेडी फॉर दैट हीलिंग. दीज थिंग्स आल्सो कम टू यू एंड शो टू यू व्हेन यू आर रेडी. तो अगर आप और 18, इसलिए 19, बहुत 20 साल इंपॉर्टेंट के है हैं, कि ये चीजें भी हाँ जिनकी आप, बात कर रहे हैं, नॉट एवरीवन शुड आल्सो डू देम. आई आल्सो एम फर्म बिलीवर कि सबको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. हाँ You really need to have a very strong sense of where you are placed in life, मुझसे what you're जब कोई doing. बोलता है व्हाट इफ आई हैव अ बैड ट्रिप, आई एम लाइक डोंट डू इट. अगर आप Yeah. सोच के यही जाएंगे कि मेरा बुरा ट्रिप होगा, मेरा बुरा, तो जाहिर बात है बुरा ट्रिप होगा, बिकॉज आप सोच ही रहे हैं कि मेरा बुरा ट्रिप होगा. इट्स लाइक गेटिंग ऑन अ रोलर कोस्टर एंड इन द मिडल ऑफ द रोलर कोस्टर बी लाइक अच्छा मैंने उतरना है. तो जाहिर बात है तुम छलांग मारोगे तो गिर जाओगे ना. बट अगर तुम्हें पता है रोलर कोस्टर है, अब इससे चलना है जितना चलना है, आई एम हियर, आई एम स्ट्रैप्ड इन, आई एम सेफ, you'll be fine. So yeah, nobody just go out and being like हाँ ये लोग कह रहे हैं हीलिंग हो जाएगी, मैं LSD पॉप कर दूं, बिल्कुल Yeah, ऐसा I ना mean that's करें. why I keep हाँ I'm repeating this because I have to be like responsible. मैं yeah. एक तंजीम का हिस्सा हूँ, मैं एक खुददार हूँ. मैं ये हर किसी नहीं कहना चाहता कि बस ये हर कोई ये करना शुरू कर दे. I do think but though इसका एक potential बहुत ज़्यादा है. This is something we have to look at seriously. Yeah. Don't be dogmatic about it. Don't like just dismiss it because something you don't understand या आपको लगता है कि क्या चीज़ है. We really need to have an evidence-based understanding of what this is and treat this with the reverence that it deserves. जो पिछली जनरेशन ने गलती की है, आज भी अगर आप बोल्सोनारो के खिलाफ अमेज़न ट्राइब्स की जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वो जब कहते हैं भाई आपकी डेवलपमेंट से हम क्या करेंगे जब आप हमारा दरिया ले रहे हैं, और हमें वो लगता था ये नंगे पागल बातें कर रहे हैं, अभी पागल हो गए, डेवलपमेंट के रास्ते में खड़े हुए, इनके दरिया से इनको क्या मिल जाएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, फायदा होगा. नाउ वी आर गोइंग बैक एंड बी लाइक ये लोग सही बातें कर रहे थे. सो इवन नेटिव पॉपुलेशंस हु हैड द आइडिया ऑफ आवर लैंड, कि लैंड प्राइवेट लैंड क्या होता है, वो सही Yeah, I बातें think कर रहे the थे सारे. fundamental thing this really helps us understand, which is why I linked it to the ecological question, is it really just it's a reminder after like maybe 400-500 years of human history in which we had begun to look, or maybe even longer, in which we had begun to look at ourselves as distinct from nature. और कि हम तो ये कुदरत तो एक वसीला है, हम एक अलग हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो भी हैं, या हम एक ऐसा है एक सब्जेक्ट जो इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कुदरत को बस शायद थोड़ी कम हो जाए. इट्स अ रिमाइंडर एंड अ वेरी टाइमली रिमाइंडर, स्ट्रेंजली इनफ, कि भाई नहीं, आप कोई लक्ष्य लग नहीं है, आपको ये अगर चलेगी ना तो आप लोग चूंटियों की तरह फारिग हैं यहाँ से. एंड अगर आपने जल्द कुछ ना किया, ये कनेक्शन को फिर से रीएस्टैब्लिश ना किया, तो फिर आप इस पूरी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को जो पता नहीं कितने हजार सालों से चलती आ रही है, इसको फिर यू कैन किस इट गुड बाय. क्या वो So I think समझ it's a नहीं आता timely मुझे. reminder that we need to listen. लोग कहते समझ नहीं आता मुझे, सारा दिन गुस्सा आता है. क्या करते हो, एक ब्रिक सीमेंट, कराची लाहौर की गर्मी में एक ब्रिक सीमेंट के कमरे में रहते हो, उससे सीढ़ियों से नीचे जाते हो, एक गाड़ी में बैठते हो, एक ऑफिस में जाते हो, 9 घंटे काम करते हो, फिर गाड़ी में बैठते हो, ट्रैफिक में होते हो, सारे वैसल पे सबको गालियां देते हो, फिर वापस उस सीमेंट के डब्बे में आ जाते हो. तो मैं जिंदगी से खुश नहीं हूँ भाई, तो कैसे खुश होगा.
जो सोसाइटी आप लोगों ने बनाई गई है वो आपकी लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई गई है. उस सोसाइटी में वो सोसाइटी इज नॉट डिजाइंड फॉर योर खुशी. दैट आर्किटेक्चर ऑफ दैट बिल्डिंग इज नॉट डिजाइंड फॉर योर खुशी. दैट कार इज नॉट डिजाइंड फॉर योर खुशी. द ट्रैफिक इज नॉट डिजाइंड फॉर योर खुशी. सो योर नॉन खुशी इज बाय डिजाइन. And we've been alienated so long, we just don't know what being not alienated feels like. And so there are these different I mean, techniques, I look at think, it this which way, we right? can कि use हम today सब कराची में सबसे पहली चीज आप सीव्यू बंद करते हैं. यहाँ के आप कोस्ट लाइन पे हथकड़ियां लगा सकते हैं. यूर लाइक जॉय ना मिले. खुदा ना खास्ता न्यू ईयर पे कोई खुश ना हो जाए. क्या आपको मसला है सीव्यू न्यू ईयर पे बंद करने? या गरीब लोग आ जाते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं सीव्यू खराब कर देते हैं. So even just these little joys, park बंद कर दो. Corona parks are the first thing you should open. The park closing thing makes absolutely no sense. Nothing is अच्छा, मुझे शहजाद से meant for it. मेरी हाँ, 10 I मिनट know. में मीटिंग शुरू हो रही है. आपकी गलती है. आप मेरे फेवरेट हाँ, टॉपिक मुझे आपने पता है. छेड़ I दिया just था. thought कि एक नुक्ता है जो रह गया है, जो I think वो अहम है नुक्ता नहीं है बात ना, के लिए, और हम कम करते हैं. वो मेरी जिंदगी है. मैंने बड़े पॉडकास्ट से नहीं किया था एक्चुअली जिक्र, तो बड़ा फूट फूट के आया. बट थैंक यू सो मच अमार. लॉट ऑफ थिंग्स यू सेड वर ब्रिलियंट एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज. थैंक यू एवरीबॉडी लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय. ठीक है.